So who will win the Rajya Sabha Delhi dangle, where the Delhi Services Bill is being discussed? The latest coming in, massive uproar, sloganeering, pandemonium in Rajya Sabha. Home Minister Amit Shah to speak shortly. The big fight for control in Delhi. Will bill pass the Rajya Sabha test? In all probability, yes. Why is that? Well, the Aam Aadmi Party earlier was hoping that with the help of the India Alliance MPs in Rajya Sabha, it would reach the halfway mark. However, with the YSRCP and the BJD staying with the government, voting with the NDA on this bill, it seems that the Delhi Services Bill will sail through the Rajya Sabha as well. On Friday, it was tabled in Lok Sabha, passed without a hitch with the brute majority of the Bharatiya Janata Party itself, as well as the NDA alliance in Lok Sabha. In Rajya Sabha, the fate practically the same, but what has transpired has been a heated debate on the floor of the House, where the MPs from the India alliance coming out, speaking up for statehood for Delhi, calling it trying to control a democratic elected government, where the federal democracy comes into question. Let's listen in to all the reactions coming in. This bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy. गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? If this bill is passed, the Aam Aadmi Party, that is the official name, I have no hesitation to say that it is absolutely anarchy party. Tanashahi party, that is what they are doing now. Tanashahi party, anarchy party. So BJD is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the Parliament's power to enact legislations and the Parliament's legislative competence to such matters. What I do not understand is the half-hearted support extended by two of my learned friends representing the BJD and the YSRCP. They know that this is unconstitutional. I think the Law Ministry knows it is unconstitutional. But the respective parties who are chiefly concerned with this change are Congress and the BJP. Is that the Congress, who never had any problem with this issue about control of services, has now, like a batsman who has lost form and hasn't scored a half century for 10 years, is now seeking an alliance so that it can inch towards its first 50. The AAP is like a cricket team whose captain has been caught ball tampering. A vigilance report exists, and suddenly they want to become vigilant about the vigilance report. The BJPs
present government is the third umpire. We want to stop this nefarious practice. A convention, a wholesome convention for better administration and for effective administration of the Union Territory of Delhi by the Union government now needs to be made into law, lest people subvert the services and hide their corruption. I wholeheartedly and with all the vigor at my command support this. Thank you, Chairman. The state legislature makes laws for the states, the parliament makes laws for the union territories. For the National Capital Region of Delhi, which has a special status, the state legislature or the legislature of Delhi makes the laws on the state subjects, except 3. But as Mr. Jethmalani read out, by virtue of 239 3B, Parliament has a power to frame laws beyond these 3. And that is exactly what the bill is seeking to do. All right, let's cut across right now to Rahul Srivastav, our National Affairs Editor, breaking it down in terms of numbers, Rahul. Interesting because it was very smooth sailing in Lok Sabha. The bill was passed by a voice vote last Friday. But this time around, the Aam Aadmi Party had hoped to get the numbers. The Rajya Sabha, 245 seats in the Rajya Sabha, 8 are currently vacant. That means the total strength, 237. The halfway mark, 119. And correct me if I'm wrong, the BJP right now stands at 109, but 9 each of the BJD and the YSRCP will make the BJP and the NDA alliance sail home in Rajya Sabha as well. Preeti, the numbers are definitely tight for the government as far as the Rajya Sabha is concerned. And it's been a feature, I think, for the last 20 odd years now that though the government may be in power and has the numbers in the Lok Sabha, Rajya Sabha numbers have been very dicey always. But the BJP, as has become a virtual tradition in the Rajya Sabha, and even the Lok Sabha to a certain extent, if we look at the coming no confidence motion in Parliament, you already have the YSRCP and the BJD saying that their collective strength of 34 MPs will be supporting the government. And that's likely to be the feature. Now, what has been happening is that there have been a lot of back-channel talks between the government. The government is not taking it easy. I'm told that interlocutors are in conversation constantly with the BJD and the YSRCP to ensure that every MP is there. Every member needs to be there, and that is how the numbers can be made up. Now, the real problem for the opposition is that to pose any sense of challenge, the opposition has to ensure that its MLAs are there. If they have to portray that a collective strength of the India coalition is in full force there. And what I am told that conversations will go on till late in the night, till late as long as the vote doesn't take place, because nobody wants a setback on this, and especially this bill, because it's not just a bill being passed, it is a Supreme Court order being overturned with a bill kind of situation for the government. And the government last time around, if you recall in 2014, had a setback on the National Judicial Appointment Commission. That was a setback that the government doesn't want, that once the Supreme Court has overturned one of the situations, then the government doesn't want a setback. Well, it would be interesting. We are going to expect Amit Shah to speak in a short while from now. But Rahul, to break it down in terms of the support, the Aam Aadmi Party would have hoped that the likes of BJD, though not coming in and voting in favor of the Aam Aadmi Party, would have staged a walkout, which would have meant favor Aam Aadmi Party. But that's not to happen, because one thing is very clear, that whoever is working the back channel talks, they've convinced the BJD and the YSRCP with their 9 MPs each to be in the House and vote in favor. Yes, Preeti. Arvind Kejriwal would have hoped that there would have been an opposition sense of unity. But I think the what we call the opposition lines is now looking like very clear. That's so much so that if you see the meeting in Bangalore, which took place with 26 political parties, where no invites were sent to the BJD or the YSRCP, and in that scenario, that floating group, say 63 odd in the Lok Sabha, and a similar group in the Rajya Sabha, that group will align with the government. Remember, these are political parties
which are rather more in rivalry to the Congress than the BJP, and they do not want a revival of the Congress party in their respective states. And the center has very tacitly and carefully assisting these governments. Say, for example, the cases against YSRCP leaders, not much is happening. As far as the aid to the Polavaram project is concerned, aid has been going, 12,000 crore has gone. Also significantly, as far as bank loans and other guarantees are concerned, to the YSRCP government, they have been flowing in. So what one can say is that the government has been keeping some of its non-allies very happy, so that the number game remains on its side as far as the Rajya Sabha is concerned. Though, if anybody looks at the bill, the kind of sweeping power it gives the central government via the LG is very clear that this is undermining the powers of a chief minister. It's virtually a lame duck government. If you have all the bureaucrats appointed by the center looking towards the LG and eventually delivering what the LG and the central government want. There is a situation in which a chief minister is looking at a majority decision in which two of the people are appointed by the center. So it's a very unfair situation right now. All right, Rahul, stay with me. What we're going to do is we're going to break it down. What does this Delhi Services Bill actually mean, and what would be the key changes that one would witness in terms of administration-wise where Delhi comes into question? Now, what's been dropped? Section 3A removed, preventing the Delhi Assembly from making laws. This is huge. The other annual report, nixed. NCC SA doesn't need to present annual report. The changes in appointment process dilutes provision of appointment of members of statutory bodies. What's new? Powers of appointment. LG now to make appointments in boards formed by Delhi government. That practically takes away every political administrative power where the Delhi government comes into question. And Rahul, I want to bring you in on this, because somewhere down the line, if one has to, in very layman simple terms, explain on what this really bill means, is that we, by the virtue of this bill becoming a law, will make sure that the administration or bureaucracy presides over elected members where, the chief minister or his band of ministers are concerned. See, Preeti, delivering its order, the Supreme Court had said something very interesting. The order talked about three filters to a system of accountability. The bureaucrats or the civil servants being accountable to the elected government to the legislature, and the legislature being accountable to the public. Now, this three-filter system has been altered, primarily because if you look at it, the bureaucracy will now be accountable not to the elected government of Delhi, but to the LG and center. Now, the LG is an appointee, not an elected authority. So what it does now, it leads to a formation. This bill will lead to a formation of a National Civil Services Service Authority, which will be recommending to the Lieutenant Governor. What it will be recommending? If there is any rule which is under the central rules, then the president becomes the appointing authority. If it is any law under the Delhi government, then the LG has a place. So in both the places, the center had a role. Now, if the national, that authority which is going to be created has a chief minister, a chief secretary, and the home secretary and the chief secretary are appointees of the center. They can, in a majority decision, override a chief minister. Then the LG decision can prevail over the authority in case there are differences. Now, imagine if there is an appellate authority which is taking decisions, the LG has powers even over that. Then the term LG's discretion has been changed to LG's sole discretion. Means LG has become a sole discretionary authorities under this new law. As far as peace and tranquility, state government powers and others is concerned, matters related to center, Supreme Court, High Court, or a state, LG is now the final say. The department secretaries can actually go directly to the LG, chief minister or chief secretary, bypassing their ministers. So the ministers have been undermined. If the Delhi government has no control over civil spirit, then how do you imagine a government can be functioning? Well, stay with me, Rahul. Let's listen into other political reactions, especially on the floor of the Rajya Sabha. We're going to come right back. This particular insertion in
1991 and 239, what does it seek to do? It acknowledges the sui generis character of Delhi. The honorable member mentioned there was a reality. It is a union territory, yet it has a legislature, elected government. So he used the term escalated union territory. But that sui generis character needs to be acknowledged, it needs to be fleshed out, and that is precisely what the bill that the government has brought is seeking to do. Now, the civil service authority which is being established, I found it appalling that someone can get up here and say one member is the supreme. Yes, he's an elected chief minister. He deserves full respect. He deserves to have his position as primus inter pares in this three-member committee acknowledged and respected. But to say that the other two are against the whole system, or they have been appointed and their integrity is in doubt, is an outlandish statement, if I may submit. Neither Article 239A3A nor Articles 141 and 144 can be negated without a constitutional amendment. I repeat, without a constitutional amendment, this cannot be done. And if at all the government brings, subsequently will have to bring, if they wish, because this legislation will be declared null and void. As a student of law, I understand. It will be done. All right, we're going to keep a keen eye on all developments in Rajya Sabha. Any minute now, Amit Shah would be speaking, the Home Minister concluding, and then it would be up to vote where the Rajya Sabha is concerned. Getting you all of that, a quick break to stay with us. India today is at ground zero in Torbang, and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village, that's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield. And I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV. This bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy, and of course, it violates, as I will demonstrate, the basic structure. तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए. मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा. So I support what Abhishek Manu Singhvi ji has said. I am unable to find parallel anywhere in the world. मेरा निवेदन ये है भाई कि इन किराएदारों को मत दो, मीट मच्छी की दुकान जैसे तिगरा में घुसे हम. भाई ऐसे मुसलमानों को मत दे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनका पैसा हमारा पैसा इनके पास आता है, इनसे हम ले. तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से, जो यहाँ गुड़गांव के कोई भी आए हो, जैसे मैं कातीपुर से आया हूँ, भाई मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो. और जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है, भाई वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे. बाहर से आके मुसलमान यहाँ कमाते हैं और फिर वही हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं. कांग्रेस पार्टी
and entire government is indulged in corruption. So this kind of complaints has been repeatedly coming against all the ministers, including CM, his family and entire government. Even in Bangalore, every possible place, these people have been trying to exploit. Being corrupt is become their culture, and they are completely insensitive, and people are really worried, completely they are worried. As the Lok Sabha polls approach near, political showdown between opposition BJP is escalating. Prime Minister Modi took a jab at the opposition alliance, recalling that Mahatma Gandhi's Quit India movement was launched on 9th August. The Prime Minister said similarly the country wants dynasty, corruption and appeasement to quit India. Meanwhile, the opposition has slammed the Prime Minister Modi's remarks and called it a diversion from real issues like Manipur, Haryana, violence and inflation. साथियों, 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। पूरे हिंदुस्तान ने और पूरे देश ने, पूरी इंडिया ने ये तय किया है कि इस बार 2024 में सिर्फ इंडिया को अपनाएंगे और इंडिया को ही जिताएंगे। इंडिया का मतलब है कि इंडिया जब होगी तो देश के अंदर में बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, यहाँ पे किसानों के सम्मान की बात होगी, महिलाओं के सम्मान की बात होगी। ये इंडिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस इंडिया को पूरा हिंदुस्तान अपनाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि इंडिया से डर लगने लगा है, तभी इंडिया की बातें इतनी करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की बात न करके अगर मणिपुर पे बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, अगर वो हरियाणा की जो घटनाएं हुई उस पर चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा रहता, टमाटर इतना महंगा इस पे बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। प्राइम मिनिस्टर सेड भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, वोट बैंक की राजनीति भारत छोड़ो। तो व्हाई इज इट द ऑपोजिशन इज टेकिंग इट पर्सनली? ही हैज नॉट नेम्ड द ऑपोजिशन। That means the opposition knows that they represent Bhrashtachar, they represent Tushtikarana, they represent Parivarvad. Therefore, they are taking it personally.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Powered by New Hero Zoom. Go big, go zoom. Co-powered by PolicyBazaar.com. Har family hogi insured. Gee, there's only one. Good evening. You're watching To The Point. I'm Preeti Choudhry, and let's take you directly to Rajya Sabha, where all the action is unfolding. The Delhi Services Bill right now being discussed on the floor of the Rajya Sabha. Massive sloganeering, pandemonium in Parliament. What we are expecting is the Home Minister Amit Shah to speak in Rajya Sabha shortly. He will be concluding the debate, and then it's going to be up for a vote. Now, the big fight to control Delhi playing out in the Rajya Sabha right now. Will the bill pass the Rajya Sabha test? It does seem so. On Friday, the bill passed very easily in Lok Sabha by a voice vote where the NDA enjoys brute majority. It was expected by the Aam Aadmi Party that things would turn differently in Rajya Sabha with the support of the India Alliance. Now, there are 245 seats or members in Rajya Sabha. 8 seats are currently vacant. That brings down the strength of the Rajya Sabha to 237. Out of that, the NDA stands comfortably, not so comfortable, but yet at 105. But why is it comfortable where the Rajya Sabha test for the Delhi Services Bill is concerned? Because it will have the support of 9 MPs each of YSRCP and the BJD. So will be comfortably passed in Rajya Sabha as well. Having said that, the Aam Aadmi Party and the opposition has made it more of a debate where federal democracy under threat and an attempt by the government to override a democratically elected government, which is Delhi. You had Raghav Chadha, who also invoked the Constitution, what the Supreme Court said on the bill, and not just that, what the Supreme Court said on the ordinance, not just that, also invoking Bharatiya Janata Party's own leadership of Vajpayee and Advani. All right, we're going to continue to get you more. I want to cut across right now to Rahul Srivastav, National Affairs Editor, joining us, breaking it down on the latest taking place in Rajya Sabha. But before I do that, let me quickly bring in Reena Gupta, National Spokesperson, Aam Aadmi Party. Reena Gupta, will the Aam Aadmi Party ask for a division of votes? Preeti, we will ask for a division of vote. But having said that, it is very clear that the Bharatiya Janata Party is rattled by the popularity of Arvind Kejriwal. When they could not defeat him electorally thrice in Delhi, this is a backdoor entry that they're trying to do. What they're doing in the parliament today is unconstitutional. And even if they have the votes and they win, the moment it comes up in Supreme Court, it will be thrown out. Because they, by virtue of having brute majority, they cannot change the basic structure of the constitution. And as you have seen clearly from the debates in the parliament today, that all the parties are scared that Bharatiya Janata Party will try to run these experiments in every other state. So even though some of the parties like YSR are supporting them, they're at the same time saying, we hope you don't do this in our state. So it is clear this is the most unconstitutional, the most vindictive central government we've ever had in the history of the country. But there are two legal purviews to that, Reena Gupta. You had many today in court, the likes of Mr. Gogoi, who also came out, said nothing constitutionally wrong with that. I'm going to come right back. We're also going to include Charu Pragya, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party, in this debate. But before I do that, let's listen in to Raghav Chadha. Let's listen in to Abhishek Manu Singhvi, who here representing the Congress, but representing
represents the Aam Aadmi Party in court where this case is being fought. And let's also listen in to what key members of the Bharatiya Janata Party had to say on the floor of the Rajya Sabha. Getting in all reactions and cutting across to Charu Pragya and Rahul Srivastava. This bill is completely unconstitutional. It is fundamentally anti-democratic. It is a frontal assault on the regional voice and aspirations of the people of Delhi. It violates all principles of federalism, all norms of civil service accountability, all models of assembly-based democracy. गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम। संविधान ये कहता है, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब का AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ आपातकालीन और विषम परिस्थितियों में लाए जाएंगे। ऐसी कौन सी आपातकालीन और विषम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन के भीतर बदलना पड़ गया? इफ दिस बिल इज पास, द आम आदमी पार्टी, that is the official name, I have no hesitation to say that it is absolutely anarchy party. ये Tanashahi party, that is what they are doing now. Tanashahi party, anarchy party. Sir, BJP is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the parliament's power to enact legislations and the parliament's legislative competence to such matters. All right, viewers, to break it simply, what this bill aims to do is practically the bureaucracy will run Delhi, will make the final decision, and that decision will not lie with the likes of the Chief Minister and his cabinet members. And that is what the Aam Aadmi Party says, that it will dilute a democratically elected government. Having said that, I want to quickly cut across to Charu Pragya, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party. But before I do that, I want to bring in Rahul Srivastava, our National Affairs Editor, getting us the latest from Parliament. Rahul, we are expecting to hear from the Home Minister shortly. But having said that, the Aam Aadmi Party thought it would have the numbers. They are saying they're going to ask for a division of votes, but that would be futile if you actually look how numbers stack up. Preeti, the Aam Aadmi Party wants a division because it wants the numbers to be there for all to be seen, because a voice vote does not really do that. And once you have a demand for a division, it will become very clear which party and how many MPs of that particular party voted in which direction. And that is why the Aam Aadmi Party, in what I will call a political move, is taking a legislative rule route. The Aam Aadmi Party was hoping that certain opposition players, which might not have gone with the Congress or the other opposition parties on several issues, but on issues pertaining to federal structure of the country. Because what effectively this law does is, one, not only does overturns what the Supreme Court said, but also takes away all the powers a state government really exercises, not just in terms of bureaucracy, Preeti. You know that how political equations are set by appointing people to commissions and boards and others. Now, if you talk about the Delhi Jal Board or the Delhi Electricity Regulatory Commission and others, all the powers are taken away by the central government now, because the LG has become a sole authority. And that is why the Delhi government, Aam Aadmi Party, was hoping that somewhere parties afraid that this fire may reach their homes tomorrow might actually come in and help the Aam Aadmi Party. But it seems that really hasn't happened. And I think the support of YSRCP and the BJP is set to tip the scales in favor of the government. But yes, one will have to wait and see how many eventually vote
and which way. But it would be interesting, Rahul, because by asking for division of votes, the Aam Aadmi Party also wants to know where did the India Alliance vote? Did all MPs vote in favour of the Aam Aadmi Party, which was against the bill? And that will also somewhere down the line, lay bare on how strong the India Alliance is, because this would practically be their first test in Parliament. I want to quickly bring in Charu Pragya, National Spokesperson, Bharatiya Janata Party, into this conversation. Charu Pragya, you're being charged today by the India Alliance that you're trying to dilute or override what is a democratically elected government, where issues of democracy or federalism come into question. Good evening, Preeti. We should remember that Delhi is called a union territory. And that's what it means. It's a territory of the Union of India, like so many others. And Delhi has never been a complete state. Now, that is a constitutional reality. It is written down in Article 239 to Article 242. And anyone who objects to this can just go through the Constitution again. We also need to remember that the present government in Delhi, though they are agitating constantly since the day they have been elected into office, this is a new thing. Delhi had a government before Aam Aadmi Party as well. But have we ever heard of a tussle between the centre and the state the way it's been happening since Aam Aadmi Party came to power here? It's never happened. In fact, when BJP and Congress were handling the state and the centre, even then all of this did not happen. So Delhi has functioned exactly like this and very comfortably. In recent times, we have seen that there's been a misuse of power by the Aam Aadmi Party. And I'll give you 3 very quick examples. Number 1, when they feel that a file will not move, instead of getting the chief secretary's signature on that file, they start let her finish, madam. I'll come right back to you. With only the minister's signature. Now, that is not fair. Another thing, 80% of the ministries of Delhi, the ministers they were with, were behind bars. Both the ministers went behind bars and then they were disowned by the Aam Aadmi Party itself. What's going to happen to people of Delhi if that's how you govern? And third, another very important thing, we know what happened during the liquor scam. We know what happened when the Chief Minister of Delhi was building his bungalow, his palace. Instead of taking out a tender, which he's supposed to do, which is mandated by law for any government, for any amount of expenditure above 10 crore, the government of Delhi decided to break down the expenditure into less than 10 crore. 6 times. What are you trying to do? The people of Delhi. Charu Pragya, what you just said, 2 of those right now are in court. So where the allegations of the scam are concerned, still being investigated. Having said that, I just want to quickly dip into the latest news break that is coming in, and then we'll cut across to the Aam Aadmi Party spokesperson to respond. The news that is just coming in from Rajya Sabha, what we are given to understand that the Aam Aadmi Party will ask for a division of votes. They did not in Lok Sabha because brute majority by the NDA, but an attempt by the Aam Aadmi Party to understand who voted for them and who voted against them. After the voice vote, there will be a call by the Aam Aadmi Party to ask for a division of votes, what we were just discussing a short while ago. It will not just give an indication to the Aam Aadmi Party and the India Alliance of where the likes of the YSRCP, BJD, 9 MPs each voted, but also where the India Alliance voted. Did somebody cross-vote or not? Having said that, quickly cutting across to Reena Gupta. Reena Gupta, please respond. Grave charges at your doorstep. There is nothing unconstitutional about it, something which was echoed by the likes of Mr. Ranjan Gogoi today in Parliament as well. And on the other side, it's been an allegation that your government is corrupt, you were mishandling administration, your appointments were all over the place, and this was the need of the hour. Preeti, the people of Delhi have seen many tyrants come and go, and Mr. Modi will be the next one. See, let's not forget that their own senior leaders, Modi ji's guru, Lal Krishna Advani, was the one who presented a bill in Parliament to make Delhi a full state. Mr. Modi himself in 2014 said that he will make Delhi a full state. Sahab Singh Verma, Madan Lal Khurana, all their leaders have lobbied for making Delhi a full state. This shows you the duplicity
and the corrupt and cheating behavior of Bharatiya Janata Party. That when they cannot win in people's verdict, in people's mandate, they just want to grab power by hook or by crook. Whether they misuse the ED or the CBI, and in this case, they have gone ahead and brought an unconstitutional bill. And the reason it's unconstitutional is that you cannot change the basic structure of the Constitution. And by well, it is interesting, Reena Gupta. I would like to cut across to the Rajya Sabha proceedings, if we can, just for about a minute. What you are speaking of, there's a heated debate going on where right now Mr. Manoj Jha has invoked the Constitution as well with what is going on. Let's quickly dip in for 30 seconds. I'm going to be back onto the debate. No, every time, Mr. Nagar, you look at that side. I will take care of it. Look at this side. And make your point. It will be more impactful. सभापति जी केवल मैं सिर्फ मैं ये जिक्र इसलिए किया कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में Make your point. We're going to come right back to it. Preeti, the point I was making is that they have lost 3 elections against Mr. Arvind Kejriwal. And they know that nowhere in the near future will they ever be able to win the hearts of people of Delhi. That is the reason for this backdoor entry. Now, coming back to the Constitution, 239 AAA very clearly delineates the powers of Delhi's Legislative Assembly and the powers of the central government. There was no confusion whatsoever, and we are very sure that the moment this comes up in the Supreme Court, the court will throw it out. Because the court has said again and again that the Constitution's basic structure cannot be changed by the Parliament. And by bringing about this bill, they are trying to change the basic structure of the Constitution. I would just urge them that, why don't you just go back to the people and ask for their votes rather than All right, doing Charu these Pragya, unconstitutional things. you couldn't defeat the Aam Aadmi Party 3 times over. Therefore, these are all attempts to take over a government by undemocratic means. Okay, Preeti, 2 points. What I am saying about democratic elected representative vote. There's a problem with your audio link. Will you please get it fixed? We can't hear you. There's a problem with your audio link. Please get it fixed. We're going to come right back. I want to go across to Rahul Srivastav in the interim being. Rahul, interesting how things are playing out in Rajya Sabha. Expected lines, the numbers are going to in all probability lie with the NDA. But going from here on, do you see the fight in Supreme Court being long and protracted? Nothing that's going to come off anytime soon? See, Preeti, one can't comment on how long the proceedings in the court can take, because one doesn't want to prejudge the mind of the courts. But the fact is that given the current law, if it becomes a law, I see a certain amount of problem for Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party and advantage BJP. And I think a complete breakdown between the centre and the Delhi government. Why I say that? You see, it does not, the bureaucracy and the systems don't follow the constitution or the rule book. Bureaucracy always functions by understanding where the powers lie. The bureaucrats in this country operate on the basis that where the butter on their bread actually comes from. Now, the appointing authority is the center. The deciding authority is the LG appointee of this center. The punishing authority, the probing authority, the vigilance authority, everything is the center. Now, in that scenario, the bureaucracy's loyalties will lie more with the center. True. And that's not a very happy situation. Well, it's got, whatever one might say or suggest at this point of time, you have the Aam Aadmi Party and the Delhi Chief Minister in a corner once this becomes a law. We're going to expect to hear from him shortly after we see the bill in all probability be passed in Rajya Sabha. Once again, let's try and connect to Charu Pragya, who is trying to make her point. Charu, if you can hear us, please go ahead. Yeah, I can hear you. Am I audible now? Yes, go ahead. Thank you. So, yeah, I just wanted to make 2 points very clear. First of all, a democratically elected representative voting in parliament for any bill makes it democratic. I don't understand what this whole hue and cry is about. And secondly, tell me one instance in Delhi where this
the city of Delhi was functioning as a full state. That's never happened. Delhi is a union territory. And because it is the capital of the country, it has a chief minister in place, which none of the other union territories do. But please understand, it is a union territory. Your whims and fancies is not going to change that. And if that is what you need to challenge, why don't you go to the Supreme Court asking for that aspect to be changed instead of complaining? Today you are debating in Parliament because it suits you. You do not want to debate on any other issue. But let's see how your so-called alliance holds after this specific vote, because there has been mixed reactions from MPs of political parties that are kind of supporting you otherwise. So you also had to take a stand and say that we'll be a part of INDIA only if you speak out against the ordinance. It's not really happened, not completely. So I'm also going to wait and watch whoever this, is in the alliance, whoever is been in the alliance, Charu Pragya has spoken up for the Aam Aadmi Party, be it the Congress, who was sitting on the fence for a while. They've spoken out vociferously, both in the Lok Sabha and Rajya Sabha. And we'll know today once the vote comes to a pass. Reena Gupta, please respond. You've always been a union territory. What's the hue and cry right now? We've always been a union territory with a legislative assembly. And Article 239AA gives Delhi the powers, the Delhi Legislative Assembly some powers. It gives some powers to the central government, which has been always very clear, Preeti. But I'll give you an example. Tomorrow, if there is a problem with electricity in your house, or there's a problem with water in your house, whom will you go to? Will you go to the Babu and say, will you go to the LG? Are the LG's doors open to the general public of Delhi? We've always gone to our elected representatives for these small problems. Now with this new change, we will have nobody to go to because the Babus will continue to get paid even if they don't do the job. If our MLAs, our elected representatives are not doing their job, we had the option of voting them out in 5 years. We don't have that option anymore. And this is not just Delhi, Preeti. The point which was being discussed in the parliament, the reason everybody from various political parties spoke is because everybody is sure that once I'm going to go into a quick break, but Charu Pragya, I want to get you in on one very quick aspect of it all. 2014, this was part of your own manifesto when Delhi went into election in 2013. You've had the Prime Minister, you've had LK Advani, you've had even Mr. Vajpayee ji come out and propose exactly what the Aam Aadmi Party is fighting for in Parliament today. Yes, and I realize Aam Aadmi Party continues to quote that at us. But at the same time, we've got evidence. We've got RTI replies which have been sent to us by people who are working in the Delhi government. And these RTI replies show us that there has been massive misappropriation of funds. There have been utilization of funds, which is for the benefit of the people of Delhi, which is being used elsewhere. And those things you have to be responsible for. Now, you are to keep on, even though he's in jail endlessly for months, but sack the other one because it suits you. So they will continue to quote Nehru now. They've deserted their own leaders. With that, I'm going to go into a quick break. To stay with us while live visuals coming in there. You see Derek O'Brien on the floor of the House, Rajya Sabha. Very shortly, you'll hear from the Home Minister as well. But we're going to leave you with these visuals from the Rajya Sabha. Quick break to stay with us. All eyes on what is taking place. The centre will also have to truly respect the federal nature of our constitution, quote unquote. Fact of the matter is there is a MOU signed by the Congress party which remains a mystery till date. And then there is this New York Times report about a certain portal and how money was transferred for propaganda for Chinese. And they have been also been part of the ecosystem supporting the Congress party. So all this needs an explanation when I would call it an enemy country like China is using our media to expand its base in India. We have sensitive borders with them. Many of the Manipur issues which we said has gone into the background, no, it's not gone into the background. It is a lot of weapons coming in from China via Burma.
which is the soft border. Now, these are issues that need explanation. And if the Congress party doesn't give a reply to this, then, we will take this to the logical end through discussions in Parliament to the streets of the country and raise issues. Because what is a political party doing meddling around with funds coming in from China? कांग्रेस पार्टी सब ने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। जहां तक मैं बोलना चाहता हूं, ये तो क्या है, कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। आज बड़ा एक सीरियस मामला मैं उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 26 degrees. Kolkata, maximum 29 and minimum 25 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 35 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 29 and minimum 22 degrees. As the Lok Sabha polls approach near, political showdown between opposition BJP is escalating. Prime Minister Modi took a jab at the opposition alliance, recalling that Mahatma Gandhi's Quit India movement was launched on 9th August. The Prime Minister said similarly the country wants dynasty, corruption and appeasement to quit India. Meanwhile, the opposition has slammed the Prime Minister Modi's remarks and called it a diversion from real issues like Manipur, Haryana, violence and inflation. साथियों, 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है,
करप्शन क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। पूरे हिंदुस्तान ने और पूरे देश ने, पूरी इंडिया ने ये तय किया है कि इस बार 2024 में सिर्फ इंडिया को अपनाएंगे और इंडिया को ही जिताएंगे। इंडिया का मतलब है कि इंडिया जब होगी तो देश के अंदर में बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, यहाँ पे किसानों के सम्मान की बात होगी, महिलाओं के सम्मान की बात होगी। ये इंडिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस इंडिया को पूरा हिंदुस्तान अपनाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी बात है कि इंडिया से डर लगने लगा है, तभी इंडिया की बातें इतनी करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की बात न करके अगर मणिपुर पे बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, अगर वो हरियाणा की जो घटना। Presented by RP Sanjeev Goenka Group, Growing Legacies. Co-presented by Century Laminates by Manish Malhotra, Fashion for your furniture. Co-presented by Macho Hind, बड़े आराम से. Co-powered by the new Kia Seltos, the badass reborn. Co-powered by PolicyBazaar.com, हर family होगी insured. Co-powered by Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Good evening and welcome. You're watching the news track. I'm Rahul Gandhi. On the show, we'll get you the inside track on the big no confidence motion debate that starts at noon tomorrow. From the information that our teams have been able to gather so far, this is likely to go on till the 10th of August. Amit Shah likely to speak on the 9th of August. Smriti Irani, Nirmala Sitharaman, Jyotiraditya Scindia, Nishikant Dubey and Rajyavardhan Singh Rathore are amongst the key speakers lined up by the government. On the side of the opposition, Rahul Gandhi likely to lead the charge on behalf of the Congress party. He's just been reinstated as Member of Parliament. What to expect? What's happened in the past when a confidence motion or a no confidence motion has been brought, and the significance of what we are likely to see over the next 3 days, which will conclude with Prime Minister Narendra Modi making his grand speech on the 10th. All that and more coming up on the news track tonight. MP Rahul returns. Stage set for Sansad showdown. Rahul to lead no confidence debate. Modi versus Rahul टक्कर. ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है. No trust vote storm. Big focus on news track. Tonight is also when the Delhi Services Bill is being debated in the Lok Sabha. We'll go across to Amit Shah, the Home Minister. He's likely to speak in the Rajya Sabha in a short while from now. So we're tracking all of that and more. Here's a look at the headlines we're following tonight. Rajya Sabha debates the Delhi Services Bill. Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi says the bill is not arbitrary. Home Minister Shah will be speaking shortly. BJP claims China linked to the Congress after New York Times report says portal NewsClick was pushing Beijing's agenda. NewsClick calls China funding allegations misleading. India Today investigation reveals the Haryana riots conspiracy. 2-minute 50-second audio clip and WhatsApp chats show the attack on the Shobha Yatra was orchestrated. Hindu side claims remnants of idols found at the Gyanvyapi complex. ASI survey to continue tomorrow. Corruption charge on the Siddaramaiah government. Karnataka governor raises graft charges against the state agriculture minister. The Mantri says
allegations are false. Today was MP Rahul Gandhi's Parliament Wapsi. 130 days after he was disqualified, Rahul was reinstated and he was back in the Lok Sabha. The Congress MP was welcomed with loud cheers and celebrations. He will now lead the opposition charge as the debate on the no confidence motion begins tomorrow. The stage is set for another Rahul versus Modi Sansad showdown. A dramatic atmosphere. Opposition lawmakers from the Unified India Alliance stand near the entrance, donning determined smiles. A car pulls up and Rahul Gandhi steps out. Rahul Gandhi is back. On Monday, the Congress MP from Wayanad in Kerala returned to Parliament after 134 days. The Lok Sabha restored his membership after the Supreme Court stayed his conviction in a defamation case. अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज His official comeback to the floor serves as a precursor to an intense debate expected over the next few days. में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है. With your kind permission. The House gears up for a high-stakes political showdown. In today's revised list of business, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है. मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है. The Narendra Modi government set to face a second no-confidence motion, the first in its current tenure. No substantive motion on policy matters. The motion moved by Gaurav Gogoi of the Congress Party on July 26. Has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. This after the government refused to buckle under the opposition pressure for a statement by the Prime Minister on the Manipur crisis within the House. 3 days allocated for this discussion. Prime Minister Modi's reply to the motion scheduled for August 10. I rise to support the government. Memories of the 2018 no-confidence debate resurface. In 2018, the Modi government faced its first no-confidence motion after a former ally, the Telugu Desam Party, alleged non-allocation of funds for Andhra Pradesh. That motion was defeated by a significant margin. आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग-अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है. मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस. In 2018, Rahul Gandhi's surprise hug for Prime Minister Narendra Modi, followed by a wink, created headlines and discussions. Fast forward to 2023, the Modi government has the numbers heavily stacked in its favor. In a house with a halfway mark of 272, the BJP by itself is comfortably poised at 303. With allies, the ruling party is expected to storm through this test once again. Given the numerical advantage resting with the governing alliance, will history repeat itself in just another hug and wink moment? Or will this motion be high on political symbolism, given its emergence on the heels of a coalition forged by 26 opposition parties? Bureau Report, India Today.
This is the second time that Prime Minister Narendra Modi will be facing a no-confidence motion, and for the inside track on what to expect over the next 3 days, we are joined by two of our top reporters, Himanshu Mishra, who tracks this government, and Mausmi Singh, who tracks the opposition for us. I want to go across to Himanshu first. Himanshu, what's the government's strategy on dealing with all the attacks that are likely to come their way during the no-confidence motion? देखिए राहुल, बिल्कुल बीजेपी की स्ट्रेटेजी है और निशिकांत दुबे पहले स्पीकर रहेंगे बीजेपी की तरफ से, पार्टी का पक्ष रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, और उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, राजवर्धन सिंह राठौर रहने वाले हैं, निर्मला सीतारमन भी रहेंगी। लगभग 20 बीजेपी के जो है वो सांसद इस पूरी डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह परसों यानी 9 तारीख को जो है वो इंटरवेन करने वाले हैं, और 4 बजे जो है वो खुद 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अविश्वास प्रस्ताव जो उनके खिलाफ लाया गया है, उनकी सरकार के खिलाफ लाया गया है, उस पर अपना जवाब देंगे। वैसे भी ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है रूल 198 के तहत लाया गया है, और इस रूल के तहत ये नहीं कहा गया कि सरकार के पास जो है वो बहुमत नहीं है, सरकार जो है फ्लोर पे अपना बहुमत हो चुकी है। ये कहकर लाया गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर पे नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर पे चौकी तोड़वाने के लिए ये एक बीच का रास्ता अपोजिशन पार्टीज ने निकाला था, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे वो मणिपुर के ऊपर ही फोकस रखेंगे, और ज्यादातर उनका भाषण जो है वो मणिपुर रिलेटेड रहेगा, यानी कि मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ है और उसका क्या इतिहास रहा है, और कब मणिपुर में कितने कब इस तरीके के क्लैशेस हुए वहां पे, इन सबको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है बिंदुवार जो है अपनी बात को रखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2019 में ये कहा था कि आप दोबारा 23 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयारियां करी मेरे सरकार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उस बयान को भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है he had predicted this in some senses about 4 years ago. Mausmi Singh, what's the lineup for the opposition? Rahul Gandhi, reinstated as member of parliament, I'm told will be leading the charge for the Congress. So Himanshu listed out all the political luminaries, Rahul, from the government side, and I can tell you that the India members would be pitching the best speakers. From the Congress's side, you're right, Rahul Gandhi could well lead the charge. It could be probably, Gaurav Gogoi, Rahul could tell him to start the entire attack because he was the one who moved that motion, but that's not a necessary condition. Perhaps it could be Rahul Gandhi who could start the entire debate from the opposition side, but I know that Manish Tiwari, Adhir Ranjan Choudhry, Kakoli from the TMC, Sogato Ray, Supriya Sule, Kanimoi, who'd gone in the delegation to Manipur. They are all the list of speakers from India parties. Clearly, the line of attack will be targeted and pinpointed on the Prime Minister, as Himanshu listed out. There were several adjournments throughout this monsoon session we've seen, and then the opposition actually resorted to getting the no confidence motion. So it is more about a perception battle, but it's a deja vu of sorts also, because remember during the president's Thanksgiving motion, before Rahul Gandhi lost his membership, he had launched a frontal attack on the Prime Minister, waving that photograph of the Prime Minister with Adani. So clearly Rahul Gandhi, as he makes a comeback, this will be his first speech, and that's one reason that the leader also met a delegation of Congress leaders from Manipur today to take an update of what's happening in Manipur, to put the government and especially the Prime Minister on the mat. We are told this entire discussion will be about 12 hours, so over 2 days the discussions will take place, starting 12 tomorrow, and then after 2 days it will be the Prime Minister who will do the answering. Okay, thanks Mausmi, thanks Himanshu. If you go back in history, Indira Gandhi between 64 and 75, 81 and 82,
faced 15 no confidence motions. Lal Bahadur Shastri 3, Narasimha Rao 3, Morarji Desai 2. This will be Modi's second no confidence motion. Jawaharlal Nehru in 1963 had one. Rajiv Gandhi had one in 1987, and Atal Bihari Vajpayee faced one no confidence motion in 2003. Joining us for perspective on what to expect, on what will be the biggest fight in Parliament, Jyotimani from the Congress, Member of Parliament in the Lok Sabha, Dr. Syed Zafar Islam, National Spokesperson of the BJP, Sandeep Shastri, wrote an interesting piece for India Today on the importance of these no confidence motions. Rahul Srivastava, our National Affairs Editor, all with us on the show. I want to go across to Sandeep Shastri first because memory is short. People tend to forget what's happened in the past. So going back in an historical arc, give our audiences tonight a sense of why these no confidence motions are so important, even though the end result is a foregone conclusion. Prime Minister Modi and the BJP will win at the end of this long debate with a thumping majority. You are right, Rahul. Till today, all the no confidence motions introduced in the Lok Sabha have been defeated. Only on one occasion, when Morarji Desai was Prime Minister, he resigned before the vote on the no confidence motion happened. So it was of no consequence. Otherwise, all our no confidence motions have been defeated. In a parliamentary system, I think the no confidence motion debate provides an opportunity to both the ruling and the opposition to make their points, marshal their arguments, challenge the government, defend the government, all that you notice in the no confidence motion debates. And I will not be surprised if that is going to be the clear focus in the next 3 days. The opposition alliance strategy will be clearly known in the speeches they make. The way the government defends itself will indicate on what basis they will go into the 2024 elections. Will it be to defend their record or will it be to challenge the opposition? So as I wrote in the piece for India Today, I think rather than the result, for me the process of the no confidence motion is more important, because during the debate there will be a lot that will be indicated, and I would watch closely the points made on both sides, because as you rightly said, the end of the debate vote, we know what would happen. So it's more important the contours of the debate, the points made by both sides, I think is what would be critical. Jyotimani, the Congress has pushed this no confidence motion in the hope of getting the Prime Minister to speak. The fear from the risk from the opposition's perspective is that not just will the Prime Minister speak last, he'll obviously give an account of what his government has done. They'll also win, allowing the government to go to the voters and say they tried to bring us down with this no confidence motion, or they tried to challenge us with the no confidence motion, and we won big. See, like Sastriji rightly pointed out, ruling party obviously has the number. This is not about the number. This is the first time in the parliamentary history of India an opposition moving a no confidence motion to bring the Prime Minister to the House. It's unheard of anywhere and probably anywhere in the world. The Prime Minister of this country hiding from the Parliament, he's afraid to come to Parliament and talk about Manipur. The situation is really unfortunate. That is why a responsible opposition, we want to bring the Prime Minister into the Parliament at any cost. That is how the no confidence motion has been moved. So what the government achievement is 9 years, the people know about it. We see the price rise. We say the 40 years of unemployment. They wanted to hide all their failures. That is why this violence, they don't want to control the violence. Even BJP MLAs from Manipur accusing the BJP Chief Minister and the Prime Minister Narendra Modi for not act swiftly and act firmly to bring the situation into control. They do not have any interest to bring peace. Syed Zafar Islam, respond to this. Jyotimani is saying this today. Throughout the next 3 days in Parliament, opposition leaders will say
that this is not about bringing the government down, this is about bringing the Prime Minister to Parliament. They will allege, as Jyotimani just did, that the Prime Minister was in hiding or running away from speaking on Manipur. How does the government intend to counter that? Zafar Islam. Well, Rahul, repeatedly we requested the opposition that to become responsible and come for the discussion. Let's have a constructive discussion on any subject they would want to discuss, including Manipur. The Honorable Home Minister on the floor of the Parliament made an announcement and requested the opposition parties to let's have a discussion. They didn't want to have discussion. They just wanted to disrupt the Parliament. It is very evident from the fact that every time we discuss in the BAC, Business Advisory Committee, and next day they changed their mind and they disrupted the Parliament. So their intent was known to people. Their intent was not noble. Their intent was to only disrupt the Parliament. Having said that, now they have made a self-goal because they have gone for this no confidence motion. A lot of things will be debated, discussed on the floor of the Parliament, and our intention now is not to defend. There's nothing to defend because the people of this great country knows that the government of the day is doing everything for the people of this country. So it is not to defend, it is the opportunity to expose the opposition, how shallow they are, and we will expose them. Automatically, the government will be defended, but our intention is to expose them, and whatever they want to make a statement on the floor of the Parliament, but eventually they will be ripped apart because they are absolutely wrong in terms of what they are pursuing, because people of India have seen their intention to only have... Rajdeep, you've seen many a no-confidence motion. How does this compare with no-confidence motions in the past? What would you be looking out for the most? You know, the difference between many of the no-confidence motions of the 1990s and this is quite simply the fact that from 89 to 2014, which was the coalition era. In the coalition era, Rahul, every time there was a no-confidence motion, there was the question mark, will the government survive? Because the numbers were an issue, whether it was Narasimha Rao's minority government or the coalition government subsequently. Here, that's not an issue. This is simply to lay the platform for 2024. The opposition has been very keen for the longest time to at least create some platform in Parliament where they can, in a way, put the government on the mat. That's their aim. The government, for its part, is also very clear that they will use this no-confidence motion now to pitch the 2024 battle as Modi versus all. With the confidence that at least when the Prime Minister speaks at the end, he can control the narrative going into the 2024 election. So this is a no-confidence motion, not about what... How will we know who actually won, who carried the day? What would be the benchmarks to determine that? You know, I think... Because in the end, the government will win in terms of sheer numbers. This is not a... that's why I said the distinction between the coalition government era, no-confidence motion and this is that this is not about the number, this is about perception. This is about creating the perception. The opposition will try to create the perception that the Prime Minister has been running away from key issues, from Manipur. No, and the government will create the perception that the BJP's won, that it's all a big victory. You know, I just want to unfortunately cut this debate for a moment because I want to go across to the Rajya Sabha where the Home Minister is now beginning to speak. वो बिल के चर्चा में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर श्रीमान आठवले जी तक 34 सम्मानीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इसके चर्चा के समय सभी ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों में विचार रखे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान्यवर,
मैं आज जो बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्तावित करने के लिए बिल लाया हूं। ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं सारी बातों का डिटेल जवाब दूंगा कि बिल क्यों लाना पड़ा, अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी, ये बिल कैसे संविधान सम्मत है, ये बिल कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से इसको वायोलेट नहीं करता है, ये सारी चीजों का मैं जरूर जवाब दूंगा। माननीय महोदय, चूंकि इतनी लंबी चर्चा इस सदन ने करी है, मैं दिल्ली की स्थिति को थोड़े शब्दों में जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियां यहाँ विराजमान होती, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहाँ है, और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर यहाँ की सरकार को सीमित मात्रा में अधिकार दिए हैं। दिल्ली एक असेंबली के साथ मगर सीमित अधिकारों के साथ यूनियन टेरिटरीज है। तो आगे पर जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं, तो संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज है। और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकता, सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के शासन का इतिहास भी मैं जरा बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता पूर्व भी दिल्ली कई सालों से किसी न किसी प्रकार से देश का सत्ता का केंद्र रहा, राजधानी रहा। नजदीक के भूतकाल में चले जाइए तो 1911 में दिल्ली तहसील और महरौली थाना, ये दोनों को अलग कर राजधानी बनाया गया। बाद में वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों में उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस माना। स्वतंत्रता के समय के जब संविधान बनने की प्रक्रिया हुई, उस वक्त दिल्ली के स्टेटस के बारे में पट्टाभी सीतारामैया और बाबा साहेब आम्बेडकर की एक कमेटी बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिल्ली की स्थिति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया। माननीय सभापति महोदय, पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को लगभग राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। उसी कमेटी के चर्चा के वक्त पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका अलग अलग तर्क देकर विरोध किया था। मान्यवर, 1949 में संविधान के अंतिम मसौदे के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजी गई डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट का मैं पेरा पढ़ना चाहता हूं।
जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत के राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन दिल्ली को रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद राजधानी के संबंध में पूर्ण विधायी शक्ति का अधिकार रखती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। आगे अंबेडकर की रिपोर्ट कहती है, किसी विशेष क्षेत्र के मामले में क्या किया जाना है, ये राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। निसंदेह वह अन्य मामलों की तरह इसमें भी जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे। यदि वह चाहे तो दिल्ली में एक उपराज्यपाल रख सकते हैं। वह आदेश द्वारा एक स्थानीय विधायिका भी बन सकता है और इसके संगठन एवं शक्तियों का प्रावधान संसद कर सकती है। मान्यवर श्रीमान मनोज जी ने कहा कि मैं कोटेशन को पढ़ाता हूं। मनोज जी, अगर इसी प्रकार के कोटेशन का इंटरप्रिटेशन आप जेएनयू में पढ़ाते होगे तो विद्यार्थियों की बुरी गत होगी। कोटेशन का रेफरेंस मान्यवर कई मायनों में बदलता है, मगर भौगोलिक स्थिति और राजधानी का अस्तित्व ये तो आज भी वही है। ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के साथ सहमत नहीं थी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। मनोज जी जरा समझा दे सदन को कि आज क्या दिल्ली राजधानी नहीं है? आज दिल्ली की राजधानी का महत्व समाप्त हो चुका है। कोटेशन कुछ ऐसे होते हैं मनोज जी जो पृथ्वी के अंत तक सत्य सनातन होते हैं, बदलते नहीं। कुछ कोटेशन ऐसे भी होते हैं। मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 से दिल्ली को विधानसभा दी गई, किंतु विधानसभा की शक्तियां सीमित एवं संसद के कानून के तहत रखी गई। ये भी सोच समझ कर किया गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में विधानसभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लगभग 3 दशक तक मान्यवर व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकार या कमेटी बनी जो बाद में बालकृष्णन कमेटी में परिवर्तित हुई और उसमें 1991 में 69वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसमें संविधान में धारा 239 ए डाली गई और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के रेफरेंस में संविधान का जब भी जिक्र करते हैं दिल्ली के शासन को मिले हुए अधिकारों के लिए, तब संविधान में धारा 239 ए को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीजों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर मान्यवर इसका रास्ता निकलेगा। मान्यवर, क्या हुआ बाद में? 91 से 2015 तक ऊपर नीचे कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार आई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के
काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है, भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया, ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आए। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे जो अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। मान्यवर, मैं इसलिए बात करना चाहता हूं कि नई व्यवस्था आई, कई सदस्यों ने कहा, मैं तो तब बोलना नहीं चाहता मगर कहा है इसलिए इसे रिपीट करता हूं कि अराजकता फैलाने का काम दिल्ली में शुरू हो गया है। मान्यवर, शासन व्यवस्था के एक फ्रेमवर्क में चलना पड़ता है। अगर मैं मंत्री हूं तो मेरे मंत्री के नाते अधिकार है तो दायित्व भी है, मैं किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। मान्यवर, कई बार ऐसी व्यवस्था ही, मैं बाद में बात करूंगा, अभी चिदम्बरम जी खड़े हो गए थे, वो होम मिनिस्टर थे, तब क्या हुआ था और उन्होंने फाइल पर क्या लिखा है वो भी है मेरे पास, मैं बताऊंगा। मान्यवर, परंतु मैं इतना स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि 91 से लेकर 2015 तक ये व्यवस्था जस की तस थी, जिसको बदलने के लिए 2015 में एक परिपत्र किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, जिसको नलीफाई करने के लिए भारत सरकार ने एक परिपत्र सेवाओं के बारे में इश्यू किया। उसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष में फैसला आया, फिर सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को वो रिफर कर दिया गया। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक आदेश दिया जिसका सार है कि मंत्री परिषद की अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया। मान्यवर, फिर वो डिवीजन बेंच के अंदर, 2 जज की बेंच के अंदर गया, वहां सहमति नहीं बनी और फिर से खंडपीठ को रिफर कर दिया गया और 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सेवाओं के मामले में अपना निर्णय दिया। ये जो निर्णय है मान्यवर, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये विषय तय किया है, भारतीय संघ को केवल 3 विषयों पर, पॉलिसी और पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 विषय पर ही कार्यकारी अधिकार प्राप्त है। सेवाओं का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहता है। परंतु उसी जजमेंट में ये कहा गया, हालांकि 239 ए को कोट कर कि संसद को दिल्ली राजधानी क्षेत्र के सभी विषयों पर और किसी भी क्षेत्र पर
कानून बनाने का अधिकार है। मान्यवर, अब जो लॉयर होते हैं वो बातों को बहुत खूबसूरत तरीके से रखने में माहिर होते हैं। एक ही अधिवक्ता एक बार एक धारा को डिफेंड करता है तो वही अधिवक्ता दूसरी बार वही धारा का विरोध करता है, मगर हमको तो ऐसी महारत हासिल नहीं। हम तो सार्वजनिक जीवन के छोटे कार्यकर्ता है, तो जो सच होते हैं वो बोलते हैं। मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी को ध्यान से सुना। मान्यवर, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या करा उनको पूरा मालूम है, मैं मानता हूं मालूम होगा, बड़े विद्वान वकील है। उन्होंने अनुच्छेद 339 AA7A को पढ़ा, जिसमें लिखा है 239 AA7A के तहत संसद को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। ये उन्होंने पढ़ा, मगर इसके ऊपर 3B में नहीं गए। मैं अब पढ़ता हूं 3B क्या है। पहले मैं 239 AA में दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है। विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश। मान्यवर, इसके 239 AA3B के अनुसार दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र या पूरा राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार। अब मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर आता है, इसमें सर्विसेज आती है या नहीं आती है? सर्विस विषय है या नहीं? और मान्यवर, और इससे आगे जाकर 239 AA3C के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर आपको मिर्ची लगी होगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। आपको तकलीफ हुई है? अरे गोदी में बैठने में तकलीफ हुई है? माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। गोदी में बैठ गए। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। कैसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, Honorable Minister. Would you please raise your point of order? Point of order पे रहूंगा। Our rule says unparliamentary word cannot be used in this house. We have the book of list और उसी लिस्ट के हिसाब से किसी पार्टी किसी के साथ जाने पे उसकी गोदी में बैठी है, ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री है। कल हम भी बोलेंगे। आप डेकोरम की बात करते हो, आप डेकोरम की बात करते हो, तो प्लीज गोदी में बैठे हैं, हम बीजेपी के लिए बोलेंगे कि कौन सी गोदी है।
किसकी गोदी में बैठे हैं तो डेकोरम आप कहते हो, तो डेकोरम मेंटेन हम भी करना चाहते हैं। और स्पीकर सर, You are not to make a speech. I have heard your point of order. I reject the point of order. Take your seat. Sir, Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी, संविधान की दुहाइयां दी, डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी और अदालत के फैसले की सम्मान करने की दुहाइयां दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूं कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जन भावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस आजादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण हैं जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आए, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला है। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष, और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? Honorable members, please take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. Take your seat. One second, please. Honorable members, the Honorable Home Minister was throughout present by and large, and he heard everyone very patiently. And everyone in the House, now he has a right and duty as Home Minister to address the House. He is... Something wrong? Honorable Home Minister, nothing will go regard. Please. मान्यवर, मैं थोड़ी जल्दबाजी में प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया, इसलिए मैं थोड़ा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल नहीं लेकर आए। ये बिल संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम लेकर आए। और मान्यवर, इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। ये बिल पर ही है, ये बिल पर ही है।
यह डिस्कस मान्यवर ऐसा है कि जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। इमरजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और जब माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने पूछा कि भाई अध्यादेश अब लाए थे, तो एक बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, फिर से उनकी भावनाएं उद्वेलित होगी, मगर मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा 11 मई को फैसला आया और 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को एससी को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका तो पूरा क्यों करना पड़ा, इसका मुझे जस्टिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि विरोध भी 2 दर्ज हुए इसी विषय पर। परंतु मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, और एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वैकेशन बेंच होती है, वैकेशन बेंच होती है, और वैकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे तो मुख्य न्यायाधीश महोदय खंडपीठ भी बना सकते, संवैधानिक खंडपीठ भी बना सकते और स्थगन आदेश दे सकते। वैकेशन के बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस आ गया, वैकेशन के बाद चैलेंज किया, चैलेंज कर स्थगन आदेश मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, आज भी नहीं है। मैं तो बिल लेकर आया हूं। अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए। मगर यहां चर्चा कर एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे। भैया, अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। इसलिए मान्यवर, ये जल्दी करनी पड़ी। मान्यवर, मैं आगे बताता हूं ये जल्दी क्यों करनी पड़ी। मान्यवर, अब मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है, जरा उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11/5/23 को ये अध्यादेश आया और ये फैसला आया। फैसला लगभग 3-4 बजे के आसपास घोषित हुआ। उसके बाद में 5:30 बजे फैसला क्या था मान्यवर? फैसला तो ये था कि संवैधानिक खंडपीठ ने एक फाइंडिंग दिया है, ये रेगुलर बेंच के सामने जाएगा, रेगुलर बेंच हियरिंग करेगी और बाद में इस पर आदेश पारित करेगी, तब जाकर फैसला लागू होगा। फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। मगर जल्दबाजी किसको कहते हैं मैं बताता हूं श्रीमान राघव चड्ढा जी। जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, एक नीति विषयक फैसला लिया जो 2 जजों की खंडपीठ ने सुनकर उस पर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। 11/5 को शाम को 5:30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सचिव सेवाओं के मतलब सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया था। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। बोले अभी तो खंडपीठ 2 जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू किया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी, अभी तो एप्लीकेशन मंगाई, नोट मंगाया है। सोशल मीडिया पर कह दिया श्री आशिक माधवराव मोरे को बदल दिया गया। कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे मान्यवर? और इसके आगे मैं जाना चाहता हूं। इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस के मिनिस्टर ने सभी
सहायक निर्देशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करिए। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? किसके साथ में खड़े रहे हो? जवाब देना पड़ा दिल्ली की जनता को भाई। मान्यवर, इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने आदेश दे दिया 13 तारीख को कि मैनुअल के पैरा 2.22 के उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेटअप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता है, अभी तो संवैधानिक खंडपीठ को आदेश भेजा है, इंटरप्रिटेशन भेजा है, इस पर खंडपीठ ने 2 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहाँ पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। मगर विश्व में कोई भी विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती है। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया। ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर केशव राव जी कहते थे, हम तो ना इनके साथ है, ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है, ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, एक फाइल थी आबकारी घोटाले वाली, दूसरी फाइल थी एक यहाँ पर शीश महल बना है मान्यवर, बहुत बड़ा शीश महल। हमने When we speak, you stop us. Sheesh Mahal is allowed to नहीं, एक मिनट, मान्यवर, शीश महल में असंसदीय क्या है? अभी मैं आगे तो बोला ही नहीं। What is your objection? What is the problem? For sake of objection, you are raising objection. पागल हो गया है। No, you just want to hold the floor. 258. Sorry, please. 258. Sorry. Let us not make issue of non-issues. 258. Take your seat. 258. Take your seat. 250. Sit down. Take your seat. Okay, I'll sit. Take your seat. Take your seat, please. Take your seat. 258. Take your seat. Honorable Minister. मान्यवर, मैं कहता हूं शीश महल में क्या असंसदीय है, चर्चा करें जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। मान्यवर, मेरा निवेदन है, मान्यवर, मेरा निवेदन है, असंसदीय क्या है इसमें, इसकी चर्चा की जाए। मेरा निवेदन है। Take your seat, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. शीश महल की चर्चा हो जाए। Take your seat. Take your seat. Take your. You. Mr. Derek O'Brien. You deliberately got up only to create disturbance, only to create disruption. This will not be accepted. Please. Sir, leader would like to speak, sir. Leader of the House. Honorable Minister. सर, ये आपने पिछली बार भी इस विषय के ऊपर बड़ी गंभीरता बताई थी कि जो थिएट्रिक्स करने का सिलसिला इस सदन में जो माननीय सदस्य करते हैं, अगर इनको हिम्मत है, अगर
शीश महल के ऊपर चर्चा करने का है, काम अभी की अभी शीश महल के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। हो जाए शीश महल के ऊपर पूरी चर्चा। जो ये शीश महल को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, टेक योर सीट, प्लीज, टेक योर सीट। One second. Sorry, sir. 1 second. Sorry. Please. Honorable members, I was hearing the Honorable Home Minister with total focus. And there was nothing in the discourse of the Honorable Home Minister which could have invited the kind of disruption in which Mr. Derek O'Brien. I urge the House, I urge the Honorable members, we have been decorous during the whole day. Don't act on a plan. Let us believe in decorum. Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. माननीय अध्यक्ष जी, यही जिसको निशाना बनाया गया वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अपनी पार्टी के, सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है वो खर्च दिल्ली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसूल कर दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए 90 करोड़ रुपए। इसकी जांच भी यही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने थी। मान्यवर, इन्होंने दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है, मगर उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया और फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करी। मान्यवर, इसके खिलाफ भी एक जांच चली और ये जांच की फाइल भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दी। मान्यवर, BSES और BYPL ये 2 वीज वितरण कंपनियां हैं जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया है, देना है, फिर भी 2,000 करोड़ का उनको पेमेंट कर दिया गया। इसकी भी जांच चल रही है, वो जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी। मान्यवर, और ये आधी रात को जो कागज इधर उधर कोड़ने का प्रयास किया गया वो ही इमरजेंसी थी। चिदम्बरम साहब को शायद मालूम नहीं था, इसलिए पूछते थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो भाई ये इमरजेंसी थी, इमरजेंसी ये थी। और मान्यवर, अगर ये न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर करना और इसलिए इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसे स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं और सबको मालूम है जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो 6 माह के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर, जो सदन जब मिलेगा तब सदन के सामने रखना पड़ता है। तो आज मैं लेकर आया हूं। अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है भाई, बताओ तो। इतनी सारी 5 घंटे से चिल्लाट करते हैं, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? क्या प्रीपेड? नहीं, एक सेकंड। मान्यवर, खड़गे साहब की बात सही है, चिल्लाना शब्द निकाल दीजिए। बार बार रिपीटेशन के साथ इसको आप दोहरा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं बस। खड़गे साहब की बात सही है। मान्यवर, अब ये विधानसभा के अधिकारों की बात करते हैं। हम सब ये सम्मानीय सदन के सदस्य हैं
सदन जब राष्ट्रपति महोदय आहूत करती है, बाद में इसका सत्र अवसान होता है। ये संविधान की एक बनाई हुई सदन को चलाने की कार्यरीति है। इस पूरे देश में एक ही असेंबली है जिसका सत्रावसान ही नहीं हुआ ना, सत्रावसान होता ही नहीं। स्पीकर साहब सदन को मुलतवी करते थे और फिर जब बोलाना है, राजनीतिक भाषण करना है, तब सदन को बुलाकर 3 घंटे चलाकर फिर से बंद कर देते। दिल्ली असेंबली ऐसी है जिसका आज तक सत्रावसान ही नहीं हुआ है। मान्यवर, आप मुझे बताइए, ऐसे चल सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1997 के नियम 70 में विधानसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने का अधिकार दिया है। ये अधिकार इस तरह से देश के किसी भी असेंबली के स्पीकर ने नहीं उपयोग किया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर उचित है तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई विधानसभा को या संसदों को स्थगन कर ही चलाना, कभी सत्रावसान नहीं करना, वो सेशन में ही रहेंगे। अब सेशन में ही रहेंगे तो कानून कैसे बनाओगे? अब कैबिनेट बुला ही नहीं सकते। इसलिए क्या स्थिति है समझिए साहब, 2020 में सत्र की संख्या कितनी हुई दिल्ली के? 1 बजट सत्र। 2021 में कितनी? 1 बजट सत्र। 2022 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। 2023 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। उसके अलावा असेंबली की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मान्यवर असेंबली की जरूरत ही नहीं है। ये किस तरह से असेंबली चला रहे हैं मान्यवर? कैबिनेट के अधिकारी की दुहाई दे रहे हैं। 2022 में 6 कैबिनेट बैठक सिर्फ हुई है, 1 साल में सिर्फ 6। इसमें से 3 बजट रिलेटेड है और 3 एक बिजली कंपनी को सहायता करने के लिए बुलाई गई, बाकी एक भी कैबिनेट नहीं बुलाई। मान्यवर 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट बुलाई गई और दोनों बजट के कामकाज के लिए बुलाई। अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो? ना कैबिनेट मिलती है, ना सदन मिलता है और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो। ऐसा कभी नहीं होता भाई। ये जो कहते हैं ना कि क्या विशेष हुआ था, इसलिए मैं समझाता हूं मान्यवर क्या विशेष। मान्यवर IRTS, एम्स, दिल्ली मेट्रो, IIT दिल्ली, UR जैसे ढेर सारे योजनाओं का क्लियरेंस न मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशन और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से रोक कर बैठे हैं। 5G टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थे। हमारे अश्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं। 2016 से झगड़ा चल रहा है मगर इस पर कार्यवाही नहीं करी और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है, मगर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को, वो करने का समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। दिल्ली के अंदर 91 से 2015 तक यही व्यवस्था, इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी मान्यवर, और कोई कानून या कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कुछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। मान्यवर, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी, ये अध्यादेश के अंदर। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि ये एकदम वायोलेशन तो नहीं है संविधान का, मगर ग्रे एरिया है।
इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूं, विधेयक लेकर आया हूं, इसमें धारा 3(a) को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धारा 3(a) को हमने हटा लिया है, अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3(a) को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधानसभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हो, मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून नहीं बना सकते हो, इतना ही है। माननीय अध्यक्ष जी, एक मैंने कह दिया, अगर 239(a)(b) एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अफसरों को दे दिए गए, कैबिनेट के अंदर अफसर कैबिनेट नोट भेजेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो 2 सरकारों में रहा हूं, गुजरात सरकार में रहा हूं और अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम रहा। कभी मैंने एज अ मिनिस्टर कैबिनेट नोट साइन नहीं किया, फाइल साइन की है, मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटरी ही भेजते हैं। शायद आप लोगों के राज्य में मंत्री की सिग्नेचर से जाती है तो मुझे मालूम नहीं है। अगर कोई ऐसा दूसरा राज्य है तो भी बताना चाहिए सदन को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खंडवार जवाब देना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि 45(a) 45(1) को जो उद्धृत कर सब लोग बोल रहे थे, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें दिए गए सारे प्रावधान ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 में पहले से मौजूद है, 93 से है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हम कुछ नया नहीं लाए, मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है, फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में आमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई, मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर, वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनता दल, ये जेडीएस, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस
ये नीतीश कुमार जी है, जेडीयू, ये नीतीश कुमार जी है जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी कहते थे मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए। साथ में क्यों आए? मान्यवर, ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मान्यवर, मान्यवर, श्री संजय राउत ने कहा, मान्यवर, श्री संजय राउत ने कहा I know, but just take it. Don't get agitated, sir. We will have a good transactional business. Yes, leader of the opposition. Your point of order, sir. देखिए, जरा मुझे 2 मिनट चांस दीजिए बस। देखिए, शाह साहब, उन्होंने ऑर्डिनेंस पे बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस को छोड़ के वो हमारे इमरजेंसी से लेकर और अब तक जो आगे 2024 में, अरे भाई चुप, सब आधे कांग्रेस के हैं इसमें, आधे कांग्रेस में है। देखिए, आप भी सब आप भी थे। तो सर, मेरा एक ही निवेदन है कि शाह साहब अच्छे भाषा में बोलते हैं, हिंदी में अच्छा, जैसा अंग्रेजी में हार्वर्ड को उन्होंने बोले कि अच्छे शब्दों में, ऐसा वैसा ही वो भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से व्याकरणबद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन को संदेश दे रहे हैं यहाँ से कि हम जीतेंगे। मान्य खड़गे जी, और अपोजिशन का पूरा, मान्य खड़गे जी, अपोजिशन के टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप अपने विषय पे बोलिए। मान्य खड़गे जी, आप डिबेट में करीब पूरे समय रहे हैं, डिबेट में आप करीब पूरे समय रहे हैं, पर कुछ समय आप नहीं थे। मैं आपको कह सकता हूं कि आप रिकॉर्ड को देखिए, सभी सदस्यगण ने अपने भाषणों के अंदर जो आयाम अपनाया है उसका रिस्पॉन्स है। ये नहीं, ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर, खड़गे साहब, मैं ध्यान रखता हूं। माननीय, मैं खड़गे जी का बैठ जाऊंगा। मान्यवर, मैं खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने
मान्यवर, मैं खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान दिलाया। मैंने सदन की परंपराओं का ध्यान रखते हुए सटल वे में मेरी बात कही थी, परंतु मान्यवर, मैंने सटल वे में ही करी थी। मैसेज आधा अधूरा गया था, खड़गे जी ने पूरा मैसेज डाल दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर, संजय राउत जी ने कहा कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुककर नमन करता है, कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता है, कोई मोदी इज द बॉस कहता है। वो सम्मान मोदी जी का नहीं है, देश का सम्मान। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे मन में कोई मुगलता नहीं है कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी नाम के देश के प्रधानमंत्री का सम्मान। मगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी के 2 सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं। सुनिए, मगर मैं उनके एक व्यवहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का, मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं भैया? हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर, मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे। आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। और मान्यवर, ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो 1 सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर, इनको ये ठीक नहीं लगता। मान्यवर, चिदम्बरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं, दिल्ली में बीजेपी की 2 बार सरकार नहीं हुई। तो भाई, अगर यही सिद्धांत है तो आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। आपके तो ना संसद सदस्य है, ना धारासभा में कोई सदस्य है। हमारे कम से कम 7 संसद सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और यही थियरी को माने तो विपक्ष के नेता ने ढेर सारे राज्यों के लिए वो बोल ही नहीं पाए। यूपी के लिए नहीं बोल पाएंगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएंगे, बंगाल के लिए नहीं बोल पाएंगे, ओडिशा में नहीं बोल पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। ये सदन का हर सदस्य देश के झर्रे झर्रे के लिए चप्पे बोल सकते। किस तरह से देश के गृह मंत्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? मान्यवर, मैं सदन का सदस्य हूं तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिंता करने का मेरा अधिकार है, और संविधान दत्त अधिकार। मान्यवर, किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं? मान्यवर, मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है।
हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हो, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे, और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मान्यवर उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं, 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया, बैठिए मान्यवर, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। ये चर्चा वो 267 के तहत चाहते हैं। एक सेकंड, बैठ जाओ। 267 के तहत चाहते हैं, जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर, ये प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए, तो राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर, मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से? क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मान्यवर, ऐसा है जयराम जी, आपको भी मालूम है अभी नहीं हो सकती। कल अविश्वास का प्रस्ताव है, आपको मालूम है। मान्यवर, देश की जनता सुन ले, 8, 9 और 10 अविश्वास का प्रस्ताव है, इसलिए मुझे कह रही है कि आज 8, 9, 10 में चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी ही लाई है, और मैंने सदन के पहले दिन से आपको पत्र लिखा है मान्यवर, कि सदन में कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, मैं हर बात का जवाब दूंगा, और ये मेरा संवैधानिक दायित्व। मगर जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती हो, तब ये चाहते हैं मैं यहां बैठूं। मान्यवर, इनको अविश्वास प्रस्ताव वही लेकर आए हैं, मगर इसकी संवैधानिक महत्व का मालूम नहीं है। अविश्वास का प्रस्ताव होता है, मैं वो सदन का सदस्य हूं, मुझे वहां रहना पड़ता है मान्यवर। और 11 तारीख में क्या बुराई है? 11 तारीख में क्या बुराई है? मान्यवर, चर्चा से भाग रहे हैं, ये चर्चा नहीं चाहते हैं मान्यवर, होने नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर कि चर्चा करनी नहीं है, और चर्चा करे तब बोलकर भाग जाना है। आज अच्छा है, कम से कम एकता दिखाने के लिए वोटिंग करने के लिए बैठे हैं, चलो वो बहाने से भी बैठकर संविधान के नियमों के हिसाब से, संसद के नियमों के हिसाब से चर्चा करी, इसके लिए धन्यवाद। मेरा पूरा सदन से मान्यवर निवेदन है कि जो मैं विधेयक लेकर आया हूं, इसको पारित किया। I shall first put the statutory resolution moved by Sri A.D. Singh to vote. Please.
That's the big debate that's taken place today in Parliament in the Rajya Sabha, where the Delhi Services Bill that would effectively give the centre powers over the transfer and appointment of bureaucrats is being hotly debated. Amit Shah, Home Minister, delivering a speech which by the end was an election campaign speech, virtually attacking the opposition, claiming that the opposition was only opposing the bill out of convenience, that AAP and Congress were looking to come together to fight the BJP in the 2024 elections. The bill, of course, will now be put to vote. We expect the government to win the bill because parties like the YSRCP and Biju Janata Dal have broken ranks with the rest of the opposition, are expected to go with the Modi government. So the bill expected to become law, but clearly the stage now set for the battle for Delhi. Let's just listen into the voting and then we'll come back with more on the big debate. Territory of Delhi Act 1991, as passed by Lok Sabha, be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Tiruchi Siva, Sri Abdul Wahab, Sri Derek O'Brien, Dr. K. Kesav Rao, Sri Sushil Kumar Gupta, Dr. John Britas, Sri Shakti Singh Gohil, Srimati Vandana Chauhan, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Vinay Vishwam, Sri Sanjay Raut, Professor Ram Gopal Yadav, with the instruction to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. John Britas, Professor Manoj Kumar Jha, Sri Elam Aram Karim, Sri Jose K. Mani, Sri A. Rahim, Sri Tiruchi Siva, Dr. V. C. Udasan, with instructions to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Narhari Amin, Sri Ajit Kumar Bhuiya, Dr. John Britas, Sri Raghav Chadha, Srimati Priyanka Chaturvedi, Sri Sushil Kumar Gupta, Sri Dipender Singh Hooda, Professor Manoj Kumar Jha, Dr. Fauzia Khan, Srimati S. Fangan Konyak, Sri Sukhendu Sekhar Roy, Dr. Sasmit Patra, Sri Jairam Ramesh, Sri S. Niranjan Reddy, Sri Kapil Sibbal, Sri Tiruchi Siva, Dr. M. Thambi Durai, Dr. Sudhanshu Trivedi, Professor Ram Gopal Yadav. No point of order during division. With instructions to report by the last day of the first week of the next 21st session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. मेरा बहुत गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है?
का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है। मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। माननीय सदन खड़े हो, प्लीज 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 प्लीज। Sir, rule, sir, I'd like to draw your attention to rule 72.2. Rule 72.2. Sir, just one second. 72.2. It says, no member shall be appointed to a select committee if he is not willing to serve on the committee. The mover, and I repeat again, the mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve on the committee. Sir, no such discussion has been done by me. Thank you. My name has been taken without my permission, Dr. sir. Susmit Patra This ji, is a matter of please, privilege. How did I name them? Please take your case. I do not understand. This is completely wrong, sir. This is a privilege issue, sir. माननीय सदस्य, प्लीज 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 टेक योर सीट, प्लीज प्लीज सस्मित पात्रा जी, प्लीज 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 अपनी माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठे, प्लीज। ऑल लेडी 4 सदस्यों ने एक कंप्लेन भेजा है। दिस विल बी इंक्वायर्ड, इसकी जांच होगी कैसे। ऑलरेडी मान्यवर, ये पांचों के मान्यवर, ये पांचों सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्घोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए और इसका रिकॉर्ड बनाकर, ये प्रिविलेज का मामला है मान्यवर, इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा Yes, please. No, please. No. Please. Only your intervention go on record. Please. Deputy Chairman, sir, I have not given my number. I have not signed. How this is misuse? It's a privilege of my. Somebody is misused my name. You have to take an action that. Along with you, I'm joining that. You are whoever. माननीय सदस्यगण, My name I have not given. Ponyak ji, please. Ponyak ji, please. Deputy Chairman, sir, under Rule 72.2, I object. Also, sir, I understand that the honourable member thinks he's smart. I accept that. But I would appreciate that he would not undermine another member by taking our names without our consent, sir. Sir, I object. माननीय सदस्य, जिन लोगों के नाम उनकी सहमति के बगैर दिए गए हैं, उसकी जांच होगी, प्लीज, उसकी जांच होगी, प्लीज। नाउ आई विल रीड द ऑपरेटिंग पैरा। ही हैज टू। मैंने आपका नाम दिया है, इसमें फर्जी की नाम दिया लिखा है मेरा। प्लीज आई विल नाउ रीड। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई। Those in favor will please say aye. Please, those in favor. I'm going ahead. Please, no. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the motion moved by C. Amit Shah to vote. The question is that the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up, honorable members, we shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 8 amendments. Number 11 by Sri Elamaram Karim. Okay. Number 37 to 39 by Sri P. Wilson. Thank you. Number 43 to 44 by Professor Manoj Kumar Jha. Sir, I do move. Okay. Number 57 and 58 by Sri A. Rahim. Thank you. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri Elamaram Karim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Sri P. Wilson to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put amendments moved by Professor Manoj Kumar Jha to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put the amendments moved by Sri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are 69 amendments. Number 1 to 4 by Sri Trichu Siva. Number 5 to 10 by Sri Sandosh Kumar P. Thank you. Number 12 to 36 by Sri Elamaram Karim. Number 40 by Sri P. Wilson. The people killed, I move. Number 45 to 52 by Professor Manoj Kumar Jha. Sir, what else? I do move. Number 53 to 56 by Sri M. Sammugam. Number 59 to 79 by Sri A. Rahim. Amendments moved. I shall first put the amendments moved by Sri Trichu Siva to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. So there you have it, the Delhi Services Bill all set to be passed. The numbers are with the government. It is also setting the stage for the no confidence motion that will take place in the Lok Sabha starting tomorrow for 3 days. Rahul Gandhi now set to address that. He was reinstated this morning as a member of the Lok Sabha. And the big question, of course, is are we now simply seeing this debate in Parliament today, Rajya Sabha, tomorrow Lok Sabha, setting the stage for 2024? Is the opposition justified to call the Modi government anti-democratic as it did today in the Rajya Sabha? The BJP's narrative, disunited opposition versus a strong BJP, emphasized by Home Minister Shah. Is the BJP seeking an opposition-mukt Bharat? These are some of the questions that we're going to raise as the stage is set for the big debate in the Lok Sabha tomorrow, now that the Rajya Sabha has passed the Delhi Services Bill. Joining me now at the moment is Supriya Shrinet, Congress spokesperson. Sanju Verma, the BJP spokesperson, joins me. We also hope to be joined by Priyanka Kakkar, Aam Aadmi Party spokesperson, Jasmine Shah of the Aam Aadmi Party. But first to you, Supriya Shrinet, am I right to say that Home Minister Shah has done what many feared in the opposition he would do, set the narrative saying disunited opposition, that
The only reason the Congress is supporting the Aam Aadmi Party on the Delhi Ordnance Bill is because you want to, according to the Home Minister, be in the Godi, the lap of the Aam Aadmi Party ahead of the 2024 elections. This is an opposition alliance of convenience, is what the Home Minister kept emphasizing. Your response? No, farthest from the truth. Actually, I was very disappointed with the spiel of his speech. The fact that he spoke about Manipur as if it was something routine that was happening in the country. The fact that as Home Minister, he has presided over a bloody carnage in Manipur for the last 3 months now, where women and children have suffered, and he could just mention it in passing, actually hangs my head in shame. The reality is that this government hasn't even woken up to the extent of damage, violence and pain that one of India's states has been in the throes of for the last 3 months. And the reality that the Home Minister kept saying, I am ready to debate. How does one debate with you? Manipur is burning, it's spreading to Mizoram, Haryana is in the throes of some violence. You are a failed Home Minister. No, he's saying he's ready to debate. He's giving a date, ma'am. He's saying I'm ready to debate on the 11th. Like that. Ma'am, he's saying I'm ready to debate on the 11th. He doesn't have a choice anymore. The reality is that there's a no confidence motion against the government. It's not about numbers. It's about the fact that the Prime Minister of this country needs to be held accountable. Mr. Amit Shah can keep going to town and keep giving several other speeches that he's ready to debate. The reality is that the Prime Minister of this country for the last 3 months has been quiet on Manipur, has been on several foreign trips, spoke Manipur for the first time for 36 seconds, 78 days, and only because a horrific video that shook the conscience of the world came out. That's the reality. Amit Shah can speak for all I care. He's simply shielding the Prime Minister who's on the run. A Prime Minister who doesn't believe in speaking within Indian Parliament. A Prime Minister who wants to hide away from the issue of Manipur. It's putting it as simply and as bluntly as that. You're saying that the Home Minister is running away from the issue of Manipur. Of course, today's debate was on the Delhi Services Bill. Sanju Verma, would I be right in saying that Home Minister Amit Shah chose to use this occasion to effectively make an election speech, setting the stage for what will happen in the Lok Sabha? That this is no longer about even the Delhi Services Bill. This was all about who's going to win 2024. Rajdeep, first and foremost, I take strong objection to the kind of language used by this abusive Congress panelist. She used the term bloody while referring to Amit Shah's speech on the floor of the parliament. And then she said, for all I care, Prime Minister can do blah, blah, blah. This is the kind of abusive discourse that this so-called Congress panelist who gives lectures let me correct you, ma'am. She used bloody in the context of Manipur. Let's be fair. I would have corrected her. She didn't say bloody Home Minister. I said bloody carnage. Let me finish. She didn't say bloody Home Minister. Bloody carnage. Yeah, okay. You get the point. Supriya Shrinet, I am there as the anchor. Hold on. Supriya Shrinet, I have clarified. Let Sanju Verma carry on. Please carry on, ma'am. Thank you. Rajdeep, my limited point is that without using abusive language generously, this Congress panelist Supriya Shrinet cannot make her point. Such is her low level of intellect, but we don't need to discuss that. I will make some interesting points. I don't think it was an election speech. The Home Minister very pointedly addressed, the Delhi Services Bill, quoting the Transaction of Business Rules, talking about the GNCTD Act of 1991, 1993, talking about the 2021 amendments to this particular act. But most importantly, without missing the woods for the trees, I would like to make a couple of points. First and foremost, the Congress sitting here and taking this moral high ground on Manipur, I have a strong objection to it. Because if you look at every single BJP senior leader, we have unequivocally condemned what happened to those two cookie women and have demanded capital punishment, no less. But show me, and Rajdeep, I say this with humility, because this is a very sensitive issue. Show me one tweet by Rahul Gandhi, who has an opinion on everything under the sun, who talks about मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ. Rahul Gandhi जी, मोहब्बत की दुकान के बारे में भाषण देना बंद करिए. Have you condemned the horrific Karoli gang rape of a minor? Have you condemned the horrific Alwar gang rape of two teenagers? Have you condemned the horrific gang rape of a minor in Bhilwara whose decomposed body, was
Jodhpur is important, Rajasthan is also important. Has anyone bothered to question what is happening to Adivasis in Sukma or Jagdalpur in Chhattisgarh? No, Rajdeep, please don't interrupt. No. Yeah, you know, you cannot, ma'am, the debate, that's my problem. The debate today was on Delhi. What voting is going on Delhi? Okay, so let me come to Delhi. Let me come to Delhi. Yeah, please, 30 seconds. Yes, I'm glad you gave me 30 seconds. So first, let me just say that Rahul Gandhi or Priyanka Vadra have no moral locus standi to give a lecture on democracy or morality to the Modi government. लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लगाने वाली प्रियंका वाड्रा हिम्मत है, go and visit the victims in Alwar, in Jodhpur, in Karoli and in Bhilwara, otherwise just zit it. And now speaking about the Delhi Services Bill, if you read the constitution carefully, Article 239A of the constitution, you read that along with Transaction of Business Rules 1993. There is one thing which needs to be told to your audience. Over and above Article 239AA, over and above the Transaction of Business Rules of 1993 is Article 73 of the Constitution, and Home Minister Amit Shah spoke about Article 73 each time he has discussed the Delhi Services Bill, because Article 73 gives a carte blanche. I repeat, Article 73 gives a carte blanche to the union government, the Modi government, to legislate on any matter pertaining to any state or any union territory. Your 30 seconds are up. Your 30 seconds are up, ma'am. Including Delhi. Okay, your 30 seconds are up. Priyanka Kakkar, Sanju Verma, your time is up now. Priyanka Kakkar, you know, the fact is, what is being suggested by the Home Minister right through this bill effectively was that the Aam Aadmi Party, he targeted y'all. Accused y'all of not holding cabinet meetings, accused y'all of not holding sessions of the assembly, accused y'all of corruption, accused y'all of intimidating bureaucrats, and hence said the centre has to take it over. How do you respond? Is this an attempt, do you think, to finish Aam Aadmi Party or to expose Aam Aadmi Party? Good evening, Rajdeep ji. Rajdeep ji, it has been a constant attempt of the BJP since we came into power, since the very beginning, by either imprisoning our leaders or alleging these fake corruption charges which hold no water when they reach the court. Now, I want to come to the Delhi Ordinance Bill. Even today, it is unfortunate that I believe that the Home Minister used the platform it was high on rhetoric and low on content. Clearly, Ms. Sanju Verma sitting here or the Home Minister, I respectfully submit that they have no knowledge of the law. I say this because 239AA, the clause 7A very categorically states that any further amendment will only be to supplement the provisions of 239A, not to 239AA, not to completely take away the rights of the Delhi government. You know, it also goes against their promises from 1977 to 2015 to make Delhi a full state. It also goes against all the previous netas, whether it was Atal Bihari Vajpayee ji, whether it was late Sushma Swaraj ji, whether it is Advani ji, everyone, or whether it is Madan Mohan Khurana, they all advocated the full state for Delhi. But आज इन्होंने छुरा भोंका है सबके पीठ में अपने नेताओं के, और आज इन्होंने नेहरू जी को इन्वोक किया है. They have taken Delhi back to dark ages, which is what they're trying to do throughout the country. I am saying this with full responsibility that they have they've changed the basic structure of the constitution. You're saying this has been done to undermine without amending it. Okay, you're saying this has been done to undermine the Aam Aadmi Party government in Delhi. But you know, Supriya Shine, the larger message that one got is that the BJP appears determined in a way to suggest that the opposition alliance is an alliance of convenience. That the same Aam Aadmi Party which called the Congress corrupt is now with the Congress because the Aam Aadmi Party for self-preservation, the Congress with an eye on the 2024 elections. That seems to be the direction, the narrative the BJP is setting, that the opposition is there is coming together out of opportunism versus the BJP which holds together the NDA alliance as a dominant partner. That's going to be the theme. Khichdi Sarkar versus Mazboot Sarkar. So what sounds like assertion and conviction
So what sounds like assertion and conviction to you sounds like very hollow words and being rattled to me. Because if the Home Minister and the Prime Minister weren't baffled and rattled, how do they explain the presence of Ajit Pawar as a Deputy Chief Minister 12 hours after the Prime Minister was blaming him for a 70,000 crore scam? How does he, justify the presence of 38 odd parties after the Prime Minister said Ek Akela Sab Par Bhari, 24 of who have 0 MPs? There will be 9 northeastern parties of that alliance, and I will see what they will do on the Manipur issue. The reality is that the Prime Minister or the Home Minister are absolutely baffled and rattled, and it is showing in their conduct. It is showing in their statements. It is showing in the fact that after Rahul Gandhi returns to Parliament, the BJP is running helter-skelter trying to divert issue from Manipur. The reality is that one of India's states has been burning for the last 3 months, and the Prime Minister did not choose to name Manipur 78 days till the horrific video came. So what that's you're saying, you're going to of this government, a moral compass that's in decadence. Rajdeep. Okay. Sanju Verma, just to inform our viewers, voting is on at the moment. As I said, we expect the government to win the vote rather comfortably because the Biju Janata Dal and the YSRCP, 2 parties, non-BJP parties, expected to support the government. He or she brings it to the notice of the chairman before the result of division is announced. The correction slips will be distributed to the honorable members who desire to correct their recorded vote by the officials of the secretariat. I shall now again read as the process. Okay, so the process is being read of the voting, but Sanju Verma, while that is happening, you want to respond that all of this is actually the government trying to mask certain uncomfortable truths, whether it's the truth of Manipur, whether it is the truth of Chinese entering Ladakh, eastern Ladakh, whether it has been COVID deaths. This is a government that doesn't want to confront certain issues, which is why this entire no confidence motion will be ignited tomorrow. You don't want to, the Delhi debate has been done because you want to finish off AAP. This is not about, you want to finish off Arvind Kejriwal at all costs. And you don't want to face inconvenient truths. Manipur, COVID, China. Rajdeep, your answers, your questions are so lengthy. One forgets that, whether you are asking me a question or you are also trying to be the spokesperson of some party, and now you will allege Sanju Verma is getting personal. I'm not getting personal. Please ask me a question. Don't speak on behalf of some other panelists. My simple question, is the government looking to finish off the opposition using the Delhi bill? And are you running away from other key issues? Rajdeep, unlike some politicians who are like the 3 monkeys, they are either blind or they don't speak or they are deaf and not hard of hearing. Now, very quickly, because there are 2 anti-BJP panelists here, very quickly, to Priyanka Kakkad, and very humbly, she feels the Home Minister does not understand law. If the Home Minister does not understand law, then okay, I don't need a certificate from you, so please shut up because I did not heckle you. You understand please use your language. Please, you were just talking about abuses. Look at your language. Your own supporter, YSRCP, said that make my point. Another state. I did not. Priyanka ji, let her complete. Please tell her to improve yes, her shut language. up. Please Put tell her Priyanka ji's voice down. Go ahead, Sanju. Yes. Rajdeep, I will remind you just few months back, this woman who's sitting here and giving me a bhashan on Sanju Verma's language. I remember, and don't interrupt, it will take me 10 seconds, Rajdeep, and I'm sure you will be fair to me. अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन है ये एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? हमारे सर पे आके बैठ गया ये एलजी? This is the discourse on the floor of the Delhi Assembly, talking in such abusive manner about the current Delhi LG VK Saxena, and who is the person? कौन है ये LG? None other than muffler धारी fraud Arvind Kejriwal, who claimed हम तो गुजरात जीतेंगे जी. You got 5 seats. हम तो गोवा जीतेंगे जी. You got 2 seats. हम तो उत्तराखंड जीतेंगे जी. You got 0 seats. So that is what I have to say to Aam Aadmi Party. You have 1 seat in Lok Sabha. शांत हो जाओ. Now coming to Supriya Shrinev. She repeatedly told you, Rajdeep, and your audience, Modi and Shah are rattled. They are rattled. I will very quickly in 20 seconds, and I need just 20 seconds. The last 6-month MOTN surveys plus the average of the Lokniti CSDS poll, 67% of the sample said either they are only satisfied or very satisfied with the Modi government's work. 72% said that they hail Prime Minister Modi's leadership.
43% of the respondents said that the BJP will come back to power for the third time in 2024 with at least a 40% vote share, and 61% said they see Narendra Modi as the Prime Minister for the third time in a row. And when questioned about Rahul Gandhi, 24% said that they see Rahul Gandhi as Prime Minister, and 3% see Arvind Kejriwal as the Prime Minister. Okay. Because 3% see Arvind Kejriwal as the Prime Minister. So you're please saying shut that up. these are not challengers to Mr. Modi. You made your point. Let Supriya Srinath, according to the BJP, contrary to being rattled, And Supriya just a minute, ma'am, now, your voice will be lowered. Contrary to being rattled, the BJP says, bring it on. They are more than happy to have Rahul Gandhi opening the no confidence motion tomorrow. They are saying we are ready to battle him, take him on. Is the Congress going to put all its eggs in Rahul Gandhi's basket? Do you want 2024 to be Rahul Gandhi versus Modi? No, that's an irrelevant question. We have an alliance that's called India, and it baffles Mr. Modi so much that he has actually taken on our country. He is willing to actually call our country vitriolic names. He is willing to call India Indian Mujahideen, and he is willing to enslave us by a comparison. Don't lie. India He never company. called He's India actually Indian willing to say call the Mujahideen. India. That's what he is doing as an elected. Please don't speak in between. Rajdeep, I didn't speak. This is not on. You need to lower her fader. Don't lie. So the about reality the Prime is that Minister. you have an issue Don't with lie us. You about have the Prime taken on Minister, you India. abusive woman. You have taken on India. And guess what? Anybody who takes on India will be vanquished. Because Rajdeep, India this woman wins is lying every about war, the Prime every Minister. Please contest, allow me every to rebut. challenge. She The can't fact lie that about the the Prime Prime Minister Minister on your is show. running Verma, your voice down. Only away Supriya now. from Parliament tells you how scared he is. No. The fact that the Prime Minister has not made one appearance in the Lok Sabha since the session began tells you how baffled and rattled he is with the prospect of India taking him on, because he knows he will be vanquished. India alone wins. The reality is it's not about Rahul Gandhi, or it's not about any other leader. It's about the issues of the people. It's about the common man who says, Hamari guzar nahi ho rahi hai. The way you laugh and how shameless you are to laugh when Manipur is burning, or when people are dying of hunger, or when there is joblessness, or when there is high prices, tomatoes being sold at 300, tells you your connection with the ground is completely lost. You may get the media time because you're spending through your, through your hair as far as ads are concerned. But on the ground, your connection is broken. People of this country have had enough of your arrogance, and they will pay you back in kind. And they pay you back heavily when they do. Trust me on that. I should give, because of your ego and your arrogance. In the interest of fairness, let me give a final word to you, Sanju Verma. Sanju Verma, no confidence motion tomorrow. Are you saying bring it on? Or is this going to be the no confidence motion unlike 2018? Unlike 2018, where issues from Manipur to COVID to China will push. Why should she have a final Rajdeep, when she was speaking, you did not take me on screen. Ma'am, I'm giving equal time. Supriya, I'm giving equal time. Yes, finish off Sanju Verma. Yes, I will let you also want to speak, be on Priyanka. screen. Thank you, Rajdeep. Rajdeep, हिंदी में एक कहावत है. How old are you? ये मत पूछो कि मेरी पहचान क्या है. ये मत पूछो कि मेरी पहचान क्या है. तुम मुझे बदनाम करो. तुम्हारी जहां तक औकात है, ये मत पूछो मेरी पहचान कहां तक है. तुमसे हो सके तो मुझे बदनाम करो. तुम्हारी औकात जहां तक है. So I just want to tell the opposition that while they keep, fretting and fawning and fuming that, oh, Modi Shah rattled, democracy khatre mein hai. Tell me one thing, Rajdeep. Is Rajasthan, the red capital of India, not a part of India? Why is the opposition not talking about Rajasthan? Is Chhattisgarh not a part of India? Why is the opposition not talking about Chhattisgarh? You made that point earlier. I asked you, is the government ready to face inconvenient questions on Manipur, China, COVID, growth, inflation? Can I finish, Rajdeep? No, you answer my question. We have limited time now. Okay, I will just say this to you, Rajdeep. 2 days back, the S&P Global, the world's biggest credit rating agencies, and remember this, your audience needs to know, don't lower my fader. When P. Chidambaram was the finance minister and Manmohan Singh was the prime minister, S&P Global had reduced India's rating to just one notch above junk status. 2 days back, S&P Global says that under Prime Minister Narendra Modi,
thanks to structural reforms carried out by India, which is the world's fastest growing economy for the third year running, India under Modi has strengthened its claims, quote unquote, to being a global superpower. Morgan Stanley says that China has been downgraded, but India has been upgraded to overweight. So you're... And Rajdeep Sardesai, I just want to ask you one thing. For a change, just for a change, indulge me, I never ask you. Will you congratulate Prime Minister Narendra Modi once for overtaking the United Kingdom and becoming the world's fifth largest economy in terms of nominal GDP at $3.75 trillion? Just say, I congratulate Prime Minister Modi. Saying... Just say that. Say that. Ma'am, it is not my job to congratulate. Are you really saying, ma'am, I am delighted as an Indian. Let me tell you, if India's economy grows, I am delighted as an Indian that the Indian economy grows. If the Prime Minister contributes to it, good luck to him. Just as... Can you say, well done, Prime Minister Modi? I will, ma'am, are you going to give all the credit for what is happening to Prime Minister Modi? Is that what you want? Okay. If that's what you would make you happy, I'll say Prime Minister Modi gets the credit, but the credit really, frankly, goes to an economy which has been growing steadily since 91 to 2023. Supriya Srinath and Priyanka Thakkar, they are a bunch of losers. Okay. Inke Kejriwal ko koi nahi puchta nationally, now I will leave it there. I will leave it there. My colleague Gaurav Sawant now takes over with India First. As you can see, voting on in the Rajya Sabha, we expect the government of the day to carry the bill and pass the Delhi Services Bill, which will now become law, giving powers to the centre to appoint and transfer bureaucrats. Over to Gaurav Sawant and India First. Co-powered by the new Kia Seltos, the badass reborn. Co-powered by PolicyBazaar.com, her family hogi insured. Extra safe Polycab Green Wire. The chilling new audio files. जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट, ठीक है? गुजारिश है ये आपसे, आज मौका है. Planned attack to kill at least 20 in the temple. 100-200 से आगे होंगे, कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से. कम से कम जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था. Haryana government probes the chilling new audio tapes. Apparently हमें लगता है कि किसी ना किसी ने इसको मास्टरमाइंड जरूर किया है. Stones, petrol bombs, mob launched a targeted attack on the temple. ये देखो भाई फाइल. New riots, a planned conspiracy. The chilling new audio tapes. That's our top focus on India First. The voice in that audio clip is spine-chilling. With clinical precision, the voice calls for targeting of devotees at the Shringar Shiv temple. The voice on the audio tape calls for circulating the message in multiple WhatsApp groups to ensure it spreads far and wide, all the way to Saudi Arabia. Police are now probing the audio message, the WhatsApp groups and the targeting of the Shringar Shiv temple 45 kilometers away from Noor. Exclusive details on India First. I'm Gaurav Sawant as always. Let's get started with the headlines at 10. Voting underway in Rajya Sabha, contentious Delhi Services Bill will give almost complete powers to the centre to decide on transfers, postings of bureaucrats. Stage set for India versus NDA clash in Parliament. The debate on no confidence motion brought by the opposition against the Narendra Modi government begins tomorrow. Smriti Irani, Nirmala Sitharaman to lead the BJP charge. Rahul Gandhi's Lok Sabha membership restored after Lok Sabha Secretariat issues notice. Grand welcome for the Congress Party MP in Parliament.
BJP claims a China link to Congress after New York Times report says news portal NewsClick was pushing Beijing's agenda. NewsClick calls China funding allegations misleading. Corruption charge on the Siddaramaiah Sarkar. Karnataka governor raises grave charges against state agriculture minister. The minister says the allegations are baseless and false. There is a rising clamor in Haryana to implement the Yogi model of governance even in Haryana. The Vishwa Hindu Parishad in Haryana wants Yogi Adityanath as the Chief Minister of Haryana, or at least the implementation of Yogi Adityanath's policies like in Uttar Pradesh to ensure zero communal clashes and the targeting of Hindus in India. At a Mahapanchayat that was organized in Gurugram, several sarpanches wanted Manohar Lal Khattar to step down as Chief Minister. They claimed he failed to provide security to Hindus to the temple procession, and that is where Yogi Adityanath's bulldozer politics is what is required. Bulldozer policies are required. Let's listen in to voices from ground before I get you much more on an India Today special investigation into the new clashes. इस मुख्यमंत्री की इस्तीफे की हम मांग करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। और साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे। मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे और भारत सरकार कहे कि आज से मेवात योगी जी के अधीन रहेगा। The chilling Mewat audio tape, the new audio tape that exposes planned attack on devotees at the Shringar Shiv temple 45 kilometers away from Nu. An audio tape where the speaker taunts. Before I get you that story, big story on India Today. Delhi Services Bill passed in Rajya Sabha. Government had the numbers, government had support of several parties. The government had absolute numbers in Lok Sabha, but these are images from Rajya Sabha. Delhi Services Bill passed in Rajya Sabha. Motion moved. There is one amendment by Dr. John Britas for reference of the registration of births and deaths amendment 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Dr. John Britas, you are moving the amendment? I am moving, sir. You are moving the amendment? Moving. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. I shall now call upon the members whose names have been received for participation for the discussion. Members. Srimati Sulata Dev, please. माननीय उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन सर, मुझे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये बिल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का आया है, जन्म और मृत्यु का, मैं बिल को मेरे पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से समर्थन करती हूँ।
अब जब देश बदल रहा है तो कानून भी बदलना चाहिए सर। इसीलिए क्योंकि जो पुराना कानून हम लोग 54 साल से पहले आया हुआ था, वो कानून का अभी बदलने का वक्त आ गया है। क्योंकि हम लोग सब देखे हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में कितना सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के। क्योंकि मैं खुद एक ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि अगर जन्म और मृत्यु के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होता है तभी कितना मुश्किल होता है। अगर छोटी बच्ची होती है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट सभी जगह दिया जाता है, जैसे स्कूल हो कहीं पर हो, मगर बर्थ सर्टिफिकेट को निकालने के लिए ये सब भी मानेंगे कि हमारे जुतियाँ घिस जाती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक निकालने के लिए हम लोग जब इधर उधर उधर भागते रहते होते हैं, हमारे जुतियाँ घिस जाती है। और वैसे ही ठीक अगर हम लोग डेथ रजिस्ट्रेशन मृत्यु का भी सर्टिफिकेट निकालना चाहे तो भी उतना ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सारे जो है ये फिजिकली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। मगर जब के अब डिजिटल इंडिया की बात हो रहा है तो ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन जन्म और मृत्यु का पंजीकरण डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हो रहा है। अब ये बिल अमेंडमेंट होके ये बिल पास होने पर जो बच्चे पैदा होंगे, मैं तो बोलूंगी कि वो सारे बच्चे इतने खुशनसीब होंगे कि उनका सारा जो जन्म का रजिस्ट्रेशन होगा वो सारे ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन। So 102 votes against the Delhi Services Bill, 131 in favor. I want to cut across to India Today's Aishwarya Paliwal for more on this. Aishwarya, the government was in no doubt about it. The Union Home Minister Amit Shah on the floor of the Rajya Sabha had made it very clear whether it's the no confidence movement or a discussion on Manipur that is open to the idea on the 11th, or here the government was very clear. It had the numbers. Well, that exactly is something that the Bharatiya Janata Party and the central government had been time and again speaking about the fact. A very emotive speech there, Gaurav, being made by the Home Minister of the country, Amit Shah, clearly pointing towards the fact that they knew exactly what the outcome will be. Now, the big question, Gaurav, is will the Aam Aadmi Party stay in the India Alliance? Because, you know, for over the past 3 to 4 days, there has been a buzz that there is a possibility that, you know, the Aam Aadmi Party might just walk out, and also the way in which they arm twisted the Congress Party into making sure that the Congress Party was on board with them is something that we will have to see over the next few days. You know, we will now, we are all now waiting for Arvind Kejriwal's press conference that will begin shortly. But yes, one thing that this has done is that it has given a boost to the Bharatiya Janata Party, to Home Minister Amit Shah, and also given a boost to the central government, because this definitely is paving the way for the big 2024 elections. Gaurav. And again, on opposition coming together, there was a barb from the Union Home Minister Amit Shah. He said, what is this talk about this principled alliance or Siddhanto ki ladai, where the opposition claims to have come together? The Aam Aadmi Party and the Congress have been at loggerheads. In fact, there was a barb that was aimed at Mallikarjun Kharge from the Home Minister, where he said the Aam Aadmi Party is not targeting us. The Aam Aadmi Party is actually targeting the Congress, trying to ensure that the Congress is wiped out first in Delhi, then in Punjab, which brings us to that point. Are the Aam Aadmi Party and the Congress together in the opposition alliance called India? Well, a big question there, Gaurav, something that everyone, and especially the Bharatiya Janata Party, will be keeping a very close eye, because from day one, from the first meeting that took place in Patna, this is what the BJP and the top leaders, especially Prime Minister Narendra Modi, because he's been taking pot shots at India and saying that this is just a coalition of those who are extremely corrupt. If you would have noticed over the past many rallies that Prime Minister has done, he's been speaking about the fact that these are parties that only want to make sure that they rise. These are the parties that want to make sure that they they earn a lot of money. So Prime Minister very clearly speaking about the fact that this is just a coalition of the corrupt, and today by passing the bill in the
Upper House, very clearly, the Bharatiya Janata Party has set the move. The ball is now rolling, Gaurav, for the big 2024 elections. What will happen to India? We will now have to wait and watch, and all the eyes now on the press conference of Arvind Kejriwal, because Arvind Kejriwal time and again has been speaking about the fact that they were very sure that they wanted all the parties together and all of them standing together, but the numbers did not stack up in their favor. What will happen to India? We'll have to wait and watch. So this bill now goes to the president. It's a setback as far as the opposition alliance is concerned, but there's another aspect. Now, there was a proposal that was moved to send this to the select committee. Even here, several MPs, including Sudhanshu Trivedi, say they never signed that this should be sent to the select committee, and the Home Minister says this is a breach of privilege and should be taken up. Now, this again would raise serious questions about how the opposition was actually galvanizing its numbers or its strength for this bill, Aishwarya. Well, definitely, numbers are being, a lot of questions at the moment are being raised. We'll get more clarity, but the fact of the matter is, if we just look at data, it is 102 versus 131. So here also we see that the actual numbers are with the Bharatiya Janata Party. So definitely, no two ways in which the BJP, in fact, knew what exactly would take place. A big setback for Arvind Kejriwal, for the Aam Aadmi Party. What the BJP, Gaurav, has been speaking about in Delhi, it is Congress versus Aam Aadmi Party. In West Bengal, it is TMC versus Congress. So these are the questions that the BJP, Home Minister Amit Shah, Prime Minister Narendra Modi has been raising time and again, saying, what is the common thread that brings all of you together? This actually will be the litmus test for India. The next meeting, from what we understand, Gaurav, will take place in Mumbai, in Maharashtra. How many leaders will actually turn up, and will they actually look at the numbers, Aishwarya? Look at the difference between the numbers that the government has and the numbers that the opposition was able to get. 131 in favor of the government, only 102 against this bill. But before I get you more on this, and Aishwarya, stay with me, let's quickly cut across and listen in to the Home Minister's spirited defense and response to the charges laid by the opposition. Let's listen in to Amit Shah. एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर हम आए। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे, अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर आपको मिर्ची लगी होगी, बैठ जाओ। आपको तकलीफ हुई है, अरे गोदी में बैठने में तकलीफ हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल
केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का अपीसमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। क्या हासिल है वोटिंग से? क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया, ना जनता को सुन की बात मानते, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते। और आपको पता है इस कानून में क्या लिखा है, जो कानून आज पास किया है? इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, जितने दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों को के बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी। उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, कौन अधिकारी, कौन चपरासी क्या काम करेगा, ये देश के प्रधानमंत्री बैठ के दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा, कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा, कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा, कौन सा चपरासी खाना, ये काम रहेगा प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का कि आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठ के प्रधानमंत्री बनके। आप केंद्र चलाओ ना, आप दिल्ली के अंदर क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 7-8 साल में बिना किसी पावर के भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, इतने शानदार अस्पताल बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं, सड़कें बनाई, इतने सारे काम हम लोगों ने कर दिए। इनसे वो काम नहीं हो रहे। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का।
हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। मैं सुन रहा था अमित शाह जी को, वहां पे संसद में भाषण दे रहे थे, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं ये लोग, झगड़ते बहुत हैं ये लोग। मैं स्कूल बनाता हूं, ये मेरे को स्कूल नहीं बना देते। फिर मैं जब इनसे कहता हूं मेरे को स्कूल बना देने दो, तो कहते झगड़ता बहुत है केजरीवाल। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए इन लोगों ने। फिर कहते हैं केजरीवाल झगड़ता बहुत है। मैं इनको कहता हूं मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने दो। मैं अस्पताल में दवाइयां फ्री करता हूं, कहते हैं दवाइयां फ्री क्यों करता है। मैं बिजली फ्री करता हूं, कहते हैं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है, फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, कहते हैं झगड़ते बहुत हैं। मैं जो भी करता हूं, चाहे झगड़ता हूं चाहे जो भी करता हूं, दिल्ली के लोगों को पसंद हूं। इसीलिए 3 बार 4 बार दिल्ली के लोगों ने मेरे को, जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूंगा, तभी 4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी है आपको। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आपको पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं। आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया। अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए। आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की, जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके। फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे, लोकसभा में एक भी सीट नहीं देंगे। इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया। उन सब नेताओं को और उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's big attack on the Bharatiya Janata Party. He said the BJP government had stabbed the people of Delhi in the back. In 2014, Prime Minister Narendra Modi, then aspiring to be Prime Minister of India, had promised Delhi full statehood. On the other hand, full statehood was not given. Delhi's powers have been taken away.
I quickly want to cut across to India Today's National Affairs editor Rahul Srivastav joining us for more on this. Rahul, we heard what Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said, but before that, look at how the numbers are stacked up. 131 in favor, 102 against. What does this say about the opposition alliance, India taking on the NDA? That the idea of united opposition to take on the BJP in future is getting tested. One test today, and in another 2-3 days there's going to be another test as the no confidence motion going to get taken up in the Lok Sabha. Now, if you see the numbers, till evening, the numbers which the government was likely to get was 125 odd. But by getting 130, more than 130 votes, and the opposition number slipping below 110, the indication is that the some votes that the Aam Aadmi Party was counting on will come to its kitty have actually gone to, that is for the for the bill. Now, eventually, what it indicates that there is still a lot as the opposition ranks are concerned. Now, in that, if Arvind Kejriwal had tried to make it a federal issue, that the fires which have reached Delhi today will reach other states also, perhaps that has not been very convincing. And it seems other parties realize that Delhi is different from other states. And if you see Another point that was raised by the Union Home Minister was when he told Mallikarjun Kharge, the Aam Aadmi Party is not targeting me, the Aam Aadmi Party is actually targeting you. The Congress, their entire politics is about being anti-Congress, whether in Delhi or in Punjab. Is this just to create more fissures in the opposition rank, or is there merit that there are major fissures in the opposition rank, and even a bill like the Delhi Services Bill did not paper over those differences? No, your audio is bad, but I gather that you're asking me that are there very serious fissures in the Yes, go on, sir. Partially, but I think you're asking me that these fissures about the fissures. Yes, Amit Shah used his reply to the bill as far as the debate is concerned, where he tried to use it effectively to drive that wedge. One, he said that all the rules which have largely come about, the Congress had created them. And now the Congress is siding with Arvind Kejriwal, who was still now attacking the Congress party. In fact, there was a very interesting comment quipped by the Home Minister when he said that a few tons of abuses were hurled at the Congress party and various opposition leaders were called names. And then he stated also, warned Mallikarjun Kharge, that just let the bill pass and Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party will be out attacking the Congress, because he knows that in Rajya Pradesh, the Aam Aadmi Party is trying to make forays. So the idea behind the whole debate eventually materialized an attempt of test of strength as far as the two formations are concerned now, the NDA versus India. And it seems that India as a whole entity within their own interpersonals between them, the relations between them, and the relationship between the opposition groupings, India and the rest, they need a sincere amount of work. Why I say that, Gaurav, that the Delhi Ordinance Bill, and in sometime in the winter session, the government is planning to bring something as critical, is likely to bring something as critical as a uniform civil code. And if there is opposition disunity in this intervening period till the next elections, it will be very difficult for the opposition to sell a unity story to challenge the NDA. But Rahul, how will the opposition be able to sell that unity story when the opposition is taking on each other in multiple states? They're only united in targeting the Narendra Modi government or the BJP. Otherwise, in states, they're fighting. So how will they be able to sell the story? The Home Minister also referred to it, whether he was talking about the Trinamool Congress, the left, the Congress in Bengal.
or the Aam Aadmi Party and the Congress in Delhi and in Punjab? What happens next in a state like Rajasthan, for example? Yes, that's two meeting the opposition, which eventually led to the formation of India with 26, led by the Congress, has given one very clear impression that there are some troubled states where unity will be difficult and components of India will be contesting against each other. But beyond that, the idea is not really seat sharing or having a united face, prime ministerial candidate or any other. These are ticklish issues which can create division. And that is why this coalition is not getting into it. And the whole idea now of this India is to create a large nationwide footprint of perception against Narendra Modi and the BJP. Beyond that, this coalition is not of a great significance in terms that if you think it is a classic coalitions in which there will be seat sharing of a leader who will be leading all of them. I think those are difficult issues. They know that these are issues which will divide the coalition. So for a unity index, high unity index, the idea is to restrict India only till as far as creating a nationwide footprint of narrative against Narendra Modi is concerned. Okay. Now, as far as that narrative is concerned, Rahul, before I let you go, as far as that narrative is concerned, on Manipur, will the opposition be able to do that in Parliament, especially at a time when the Union Home Minister said, fine, you want debate and numbers, we can do it today in the Delhi Ordnance Bill, we can do it on Manipur on the 11th. That was the challenge to Mallikarjun Kharge. So after the no confidence motion, do we actually see a debate on Manipur on Friday, Rahul? Yes, the government has been open to the idea of a debate. But I think eventually the idea of a debate is not the core of the whole disruption or the opposition move. It wants the Prime Minister to speak up, because once the Prime Minister speak up, they feel that they will have tangibly something against the Prime Minister to paint him as somebody who has failed. The idea is not to make the government come out with answers, because if they had, then Amit Shah would have been the most appropriate and suitable person to be replying a debate on the Manipur issue, because remember, the Home Ministry is the nodal agency between the centre and the states. The idea is to make the Prime Minister speak and then build a narrative from there. And that is why, Gaurav, I'll tell the viewers a very interesting thing. This is the 28th no confidence motion in the history of this country. The first one was largely targeted at Jawaharlal Nehru government and its failure on China in 1963. But still, it was not targeted at a Prime Minister making him to speak. This no confidence motion has a unique distinction on trying to make the Prime Minister speak on an issue, and the opposition will come united to build a perception on Manipur. Interestingly, Rahul Gandhi, reinstated as a member of parliament after his supreme relief in the Supreme Court, might be leading a charge, and that might form the core of what the opposition may be doing in future. Fair enough. That happens at 12 noon, and we'll be tracking that story very, very closely. Rahul, stay with me. A quick break. Back with lots more. Keep watching our special broadcast on India Today. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV where numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Kanwal, only on India Today. और जब मैं न्यूज़ क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित
ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी ये प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक, अ पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था, एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन, ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया। और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इंफॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। Our agenda was to basically see whether there was legislative competence for the state to enact a law, given the fact that polygamy, and particularly for Muslims, is also governed by the Sharia Act of 1937, which is a central law. So it was keeping this in mind that the committee sat and finally submitted its report, and has generally pointed out that the state has the legislative competence to do so, subject to the doctrine of repugnancy under Article 254, which means it requires the presidential assent. Would this apply only with regard to the Sharia Act, as in the repugnancy with regard to the Sharia Act, or would the polygamy ban also apply to tribal practices, etc.? In fact, in the report, we have considered that very briefly, because this was specific to the Sharia Act. We've also pointed out that the tribals have a protection under the Hindu Marriage Act of 55. So polygamy, in a sense, or marriage laws, there's been codification of it. Hindu Marriage Act was 55, the Christian Marriage Act is 1872, the Parsi Marriage Act is 1936, and the Sharia Act is 1937. So with regard to that, we've pointed it out and said that this is something also that during the legislative process could be considered. इन किराएदारों को मत दो, मीट मच्छी की दुकान जैसे तिगरा में घुसे हम। भाई ऐसे मुसलमानों को मत दे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनका पैसा हमारा पैसा इनके पास जाता है, इनसे हम ले। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है सभी ग्रामीण वासियों से, जो यहाँ गुड़गांव के कोई भी आए हो, जैसे मैं कातीपुर से आया हूँ, भाई मैं भी अपने गांव वालों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के सबके आधार कार्ड देखो, जो मुसलमान हो उसको अपना मकान, कोई भी जमीन मत दो। और जो हमारे हिंदू भाई है, वाल्मीकि है, कोई भी है, भाई वो मीट की दुकान हिंदू भाई करे। बाहर से आके मुसलमान यहाँ कमाते हैं और फिर वही हमारे ऊपर कोड़ियां चलाते हैं। Quality today. In Delhi, 97.
In Mumbai, 72. In Kolkata, 65. In Bangalore, 33. In Chennai, 117. In Hyderabad, 78. You are watching India Today. The chilling new audio tape that exposes the planned attack on devotees at the Sringar Shiv temple, some 45 kilometers from Nu. An audio tape where the speaker is allegedly heard taunting residents of the locality of being timid despite being numerically stronger, and then is alleged to have said that there are only about 100 to 120 devotees at the temple, at least 10 to 20 must be neutralized. Police are investigating the source of the audio tape. They're trying to find out who all shared it and its role in the violence. We bring you much more. Arvind Ojha with this India Today exclusive. Explosive revelations on Nu riots. India Today has accessed a 2-minute, 50-second audio clip that allegedly shows the violence was planned in advance and the plot was to kill at least 100 to 200 people. अरे भाई तुमनो बताओ ये मेवात कहा इते एक बुजदिलन की है क्या कम से 100-200 आगे होंगे कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से कम से कम जैसे गाड़ी जलाई गाड़ी इनके साथ में का 10-20 ने टपका था कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट ठीक है गुजारिश है ये आपसे आज मौका है देखो हाथ अड़ाओगे तो भी इतनी गाड़ भीड़ आएगी अगर जान से भी मार दोगे 10-20 तो भी उतनी आएगी या मत सोचिए ना से हाँ तो यानी आज मौका है अपने आप है पेश कर लो ठीक है मरना तो एक दिन जब भी आज भी मरना और कल भी मरना Sensational WhatsApp chats allegedly reveal how people were exhorted to take up arms on the basis of religion. भाई जितने भी है ग्रुप में ज्वाइन हैं ये बंदे 10 हैं 20 हैं 50 हैं 150 हैं जितने भी हैं इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये भी इन पर अगर मेमन के ग्रुप हैं ना चाहे 1000 ग्रुप हैं उन 1000 में बांट दीजिए चाहे सऊदी अरब तक ग्रुप हैं समन में बांट दीजिए ठीक है देखो आज तो तुम मोहब्बत कर लो काई सु कर लो चाहे बीवी सु कर लो बच्चे सु कर लो दौलत सु कर लो धन सु कर लो किसान सु कर लो एक ना एक दिन ही तो सारी छूटेगी या तो खुद छोड़ दे जो चीज़ से मोहब्बत कर रहे हो या खुद तुम छोड़ दो या मौत आने से छूट जाए या वो चीज़ वैसे बर्बाद होने से छूट जाए या मत सोचियो कि मेरी मेहरबानी रह रही है मेरे बालक रह रहे हैं या मेरी दौलत रह रही है या मत सोचियो ठीक है जब मैं अपनी कौम पे बात बने तो बिल्कुल निडर होकर खड़े हुए सामने ठीक है मैदान में भागनो पसे पुष्ट भागनो ये बुजदिलन को काम है देख रहे हैं ना वो लेडी ले जा रहे हैं देखो The chats indicate preparations were allegedly made to attack the entire route of the VHP Shobha Yatra. दुनिया चल रही है आप वीडियो बनाने में लगे अरे खुदा के बंदे तुम नु बताओ वीडियो बना ली गए कम से कम याद छोड़ दो अपनी कौम में बचाओ Earlier, Haryana Home Minister Anil Vij had claimed that the entire violence was a big conspiracy. जिस ढंग से ये इसके ऊपर हमला हुआ है और जिस प्रकार से एकदम वायलेंस अरप्ट हुई है वो कोई एकदम हुआ हादसा लग नहीं रहा है हालांकि अभी हमें जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए हम उसकी जांच करेंगे पर अपरेंटली हमें लगता है कि किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड जरूर किया है The audio clips have exposed how the riots were meticulously planned. The police now have the task of nailing the conspirators behind the Mewat mayhem.
With Arvind Ojha from Delhi, Bureau Report, India Today. We will continue to track this story very closely. That is all we have time for on this bulletin. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us. You are watching India Today. The fact of the matter is there is a MOU signed by the Congress party which remains a mystery till date. And then there is this New York Times report about a certain portal and how money was transferred for propaganda for Chinese. And they have been also been part of the ecosystem supporting the Congress party. So all this needs an explanation when I would call it an enemy country like China is using our media to expand its base in India. We have sensitive borders with them. Many of the Manipur issues which we said has gone into the background. No, it's not gone into the background. It is a lot of weapons coming in from China via Burma, which is a soft border. Now, these are issues that need explanation. And if the Congress party doesn't give a reply to this, then, we will take this to the logical end through discussions in Parliament to the streets of the country and raise issues. Because what is a political party doing meddling around with funds coming in from China? जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है जांच की जाए और इतने लोग हैं उनको सलाखों में डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को किया जाए। कांग्रेस पार्टी सब ने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। जहां तक मैं बोलना चाहता हूं, ये तो क्या है, उस कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किए किया है। Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 26 degrees. Kolkata, maximum 29 and minimum 25 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 35 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 29 and minimum 22 degrees.
Vasant Valley School secured the top honours in the 13th edition of the Vasant Valley Aaj Tak Hindi debate competition, showcasing their debating prowess and intellectual acumen against formidable opponents there. They showcased a brilliant display of debating skills from top schools across the nation. Take a look. तो हम लोग बस चुप्पी से इन लोगों को देखते रहते हैं, ना सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और ना नकारात्मकता को खत्म करते हैं। पर मूक दर्शिता का अर्थ जो हमारा दल बताना चाह रहा है वह यह है, A fierce clash of intellect. स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम आज के सदन को भारतीय बुद्धिजीवियों के सदन द्वारा देखना चाहेंगे। हमें प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की आवश्यकता है और प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हमें अपने कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जादूगर बन सकती हूँ, वो जो ट्रॉफी है उसको 2 में भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वसंत वैली एंड सिंधिया स्कूल दोनों ही जीते। मुझे इतना मज़ा हिंदी वाद विवाद में कभी नहीं आया जितना इस वक्त आया। इसके लिए बहुत बहुत तालियां। एंड द विनर इज वसंत वैली स्कूल। And the prestigious Vasant Valley School emerged victorious in the 13th edition of the Vasant Valley Aaj Tak Hindi debate competition. कितना बढ़िया है वह समाज जहां हर घिनौने कार्य का जवाब है मूकदर्शिता। Students from the Vasant Valley and the Scindia School took on each other in the final round of the competition, which saw a thrilling face-off between the teams of both the schools. उस पे टांग अड़ाकर उसके बिना ज्ञान होए उसे और बिगाड़ने की कोशिश करता है, वह होता है मूकदर्शिता। Participants from the two teams sparred on the motion adopted by the House, Mookdarshita mein hi buddhimani, which translate into being a mute spectator is a smart decision. The competition saw an enthusiastic participation from 26 renowned schools from all corners of the country. While students representing the Scindia school debated for the motion, तो जिस आदर्शवाद की भावना से, जिस मूक दर्शक का चयन ना करने से हमारे ऊपर संकट आ रहा है, हमारे परिवार पर संकट आ रहा है, हम उसका चयन क्यों करें महोदय? महोदय, आज बुद्धिमान वही है जो स्वयं का जीवन संचालन करने में सक्षम हो, जो स्वयं की परिस्थिति को सुधार सके, स्वयं सफलता हासिल कर सके। वह बुद्धिमान नहीं है जो दूसरों की मदद करने का चोला पहन के घूम सके। बुद्धिमानी धर्म से कहीं दूर दूर तक मेल नहीं खाती है महोदय, जिस बात को समझने में मेरे विपक्षी मित्र पूर्ण रूप से असक्षम है। the students representing the Vasant Valley debated against the motion. उनके खंडन की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आके सबसे पहले मूकदर्शिता की गलत परिभाषा दी, उसको हमारे पहले वक्ता ने सही किया। उन्होंने आके बोला कि हमें अपनी जंग लड़नी जरूरी है। लेकिन महोदय, आप ही बताइए, अगर मेरे पास इस बात का हक ही ना हो कि मैं अपनी आवाज उठाऊं, अपने विचारों को प्रस्तुत करूं, तो मैं कौन सी जंग लड़ूंगी महोदय? उन्होंने आके बात करी निजी विकास की, आगे बढ़ने की, कि हमें खुद आगे बढ़ने की जरूरत है, खुद आगे होने की जरूरत है महोदय। लेकिन आप ही बताइए कि हम लोग जब अपने विचार ही आगे नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? In the end, Vasant Valley School's compelling arguments and persuasive delivery earned them the coveted title. Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 26 degrees. Kolkata, maximum 29 and minimum 25 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 35 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 29 and minimum 22 degrees. सॉरी। नमस्ते टमाटर प्रेमियों, 104.8 इश्क एफएम पर आपको चखाना चाहता हूँ आजकल का टमाटरी गीत। ये हो ग्रेवी, बिरयानी, हो चटनी, पाव भाजी, सदमे में अम्मी और अब्बा, 1 किलो टमाटर 200 का था बिल, बजट हिला मेरा रब्बा। टमाटर कैसे लोगे, 200 के किलो हो गए टमाटर। टमाटर कैसे लोगे, 200 के किलो हो गए टमाटर।
किलो में ना निकले एक भी ढंग का। मम्मी का दिमाग था सन का। टमाटर जो ना मैं छांट के लाया, मम्मी लगा देगी लंका। टमाटर वाला एक नहीं आ रहा, ऑनलाइन भी चेक कर चुका मैं। मोहल्ले की सारी रेडी पूछ पूछ के मर चुका मैं। नहीं जरूरत बर्गर में टमाटर की, सलाद बन रही खीरा प्याज और गाजर की। एक टमाटर से पूरा दिन तुम चलाओ, वन हो गई सिस्टर और अम्मा। टमाटर कैसे लोगे, 200 के किलो हो गए टमाटर। You are watching India Today. Hello, you're watching India Today and I am Ishwarya Paliwal. Let's start the show with the headlines. The contentious Delhi Services Bill that will give almost complete power to the centre to decide on all transfer postings has been passed in the Rajya Sabha. Home Minister Amit Shah is accusing the Aam Aadmi Party of indulging in fraud. Arvind Kejriwal has hit back and said that the BJP wants to stop the work done by the Aam Aadmi Party. Stage is set for the first India versus NDA clash on the floor of the Parliament. The debate on the no-confidence motion brought by the opposition against Prime Minister Narendra Modi will begin from tomorrow. Smriti Irani, Nirmala Sitharaman to lead BJP's charge. Rahul Gandhi's Lok Sabha membership restored after Lok Sabha Secretariat issued a notice. Grand welcome by India MPs for Rahul Gandhi in the Parliament. BJP claims China linked to Congress after New York Times report says the portal NewsClick was pushing Beijing's agenda. NewsClick calls China funding allegations as misleading. Corruption charges on Siddaramaiah Sarkar. Karnataka governor raises graft charges against the state agriculture minister. The minister says these allegations are baseless. Now, the Delhi Services Bill has been passed in the Rajya Sabha. Now, out of the 238 votes, the bill got the support of 131 members, while 102 members opposed this bill. Union Home Minister Amit Shah, who was replying to the queries and the objections raised against the bill, also launched an attack against the Delhi government. Amit Shah claimed that no other Chief Minister of Delhi ever fought with the centre. He also said that it is the Aam Aadmi Party which was actually born after opposing and abusing the Congress party. It's the same party that is now seeking the support of the Congress party. Immediately after the bill was passed in the upper house, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said that this bill was brought in as the BJP knows that it cannot defeat the Aam Aadmi Party in elections. Arvind Kejriwal also claims that the bill violates the Supreme Court's verdict. He said that the Prime Minister does not respect the people's mandate. एक बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर हम आए। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी इसका विरोध करे अगर सत्य है कि 91 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही,
ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई। ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो मान्यवर आपको मिर्ची लगी होगी, बैठ जाओ। आपको तकलीफ हुई है, अरे गोदी में बैठने में तकलीफ हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखल अंदाजी मत करना, आप देश संभालो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जनता की बात नहीं मानता। इतना अहंकार हो गया। 30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात का। हरियाणा के अंदर इनकी सरकार बनी, हरियाणा में बेड़ा गर्क है इनका। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इसलिए केजरीवाल के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, काम में कंपटीशन नहीं कर सकते, हमारे जैसे काम नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी के जैसे काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को काम करने से रोको, किसी भी तरह से केजरीवाल को काम करने से रोको, बस ये इनका मकसद है। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जनता के लिए काम हो सकता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता का अधिकार छीना है, दिल्ली की जनता के वोट का अधिकार छीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग तो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग हर इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और इसीलिए आज इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली की सरकार के अधिकार नहीं छीने,
दिल्ली के करोड़ों लोगों की वोट के अधिकार को छीना है। The stage is now set for a fiery no trust motion that will take place in the parliament on Tuesday. After Rahul Gandhi's comeback in the parliament after 4.5 months, the Modi government is all set to face its second no confidence motion. The motion was moved by Gaurav Gogoi of the Congress party on the 26th of July over Prime Minister Narendra Modi's statement on the current situation in the state of Manipur. With 3 days allocated for the discussion, Prime Minister will reply to the motion on the 10th of August. Rahul Gandhi gets a hero's welcome as he returns to Parliament after a break of more than 3 months. The period when he was disqualified following conviction in a defamation case. MPs and leaders belonging to the opposition alliance, India, turned up in large numbers to greet the Wayanad MP as he reached Parliament on Monday. The Lok Sabha Speaker's decision to restore the Congress leader's membership comes a day before the opposition's no confidence motion is taken up in the House. Rahul Gandhi is expected to speak on the motion. This will strengthen our ranks, particularly that the no confidence motion is coming up tomorrow. This will bolster our arguments on why this government has lost the confidence of India. भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी। राहुल गांधी इज बैक और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। The BJP has drawn the battle lines ahead of the no trust vote. The Narendra Modi government on Monday quoted a New York Times report and alleged that online news portal NewsClick is funded by firms linked to Neville Roy Singham, a US billionaire based in Shanghai. The government, citing the news report, said that Singham funds news organizations across the world to spread Chinese propaganda. The BJP dragged in the Congress, questioning why the Grand Old Party backed NewsClick when it was raided by the ED in 2021. क्या आप देश को राहुल गांधी जी जवाब दोगे कि ये 2005-7 में जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया वो कहां खर्च हुआ? जो हाई लेवल आपने मीटिंगें करनी थी वो क्या चाइना के साथ हुई? क्या न्यूज क्लिक एक उसका हिस्सा है? क्या कांग्रेस चीन न्यूज क्लिक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं? The Modi government also tried to draw a link between the Congress and the Chinese Communist Party. Congress, China, News Click are part of a umbilical cord. और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। When Parliament takes up the opposition's no confidence motion on Tuesday, it will be a preview to the big fight of 2024. This is the first time the opposition alliance, India and the NDA led by Prime Minister Modi are coming face to face on the battlefront. And all indications are the bout will be no holds barred. Bureau Report, India Today. The Bharatiya Janata Party and the Congress Party are at loggerheads over an investigation done by the New York Times. Now, in a report in New York Times, it is prompted that the BJP is now accusing the Congress of having links with China. The New York Times investigation is on a report on how Chinese government has been actively peddling propaganda across the world, including India. Now, this has actually echoed both inside as well as outside the parliament. The BJP is now demanding answers from the Congress party. It's levelling serious allegations against the Gandhis of having links to Beijing once again. The BJP raked up the funding of Rajiv Gandhi Foundation once again, demanding a detailed investigation. It's accusing the Gandhis of attempting to shield news website NewsClick when they were raided for an alleged China link way back in 2021. It is perhaps the biggest media scandal to rock India and the world in recent times. A New York Times investigation has blown the lid off Chinese propaganda being passed off as independent content, courtesy million-dollar deals. And yes, there's an alleged Indian puppet as well. Indian news website NewsClick
The same company that was raided in 2021 has been named by the New York Times investigation report as having received 38 crore rupees to run Chinese puff pieces. The NewsClick site put up videos and articles like China's history continues to inspire the working class, all because of an alleged shady deal with the Chinese Xi Jinping government. And the man who made these payments to NewsClick allegedly and many other international media platforms is reportedly Neville Roy Singham, a US tech billionaire based in Shanghai. Singham, according to the report, acted as a front for the Chinese government and paid several networks to run China-positive pieces, including Indian news site NewsClick. The rot runs deep, as Enforcement Directorate sources back in 2021 had revealed how the money had been sent to NewsClick's shareholder, Gautam Navlakha. If we go by the allegations, basically Communist Party of China, the person who was involved in this entire deal is Neville Roy Singham. He has 4 non-profits in USA and he is a tech billionaire living in Shanghai. Through Singham, 38 crore rupees traveled to NewsClick. Out of these 38 crore rupees, this becomes extremely important. Out of 38 crore rupees, 9 crore came through foreign direct investment via inward remittances. Apart from 9 crore rupees, almost 28 crore rupees also traveled, and according to NewsClick, it was in exchange of some of the services which they provided. But when Enforcement Directorate raided their premises, when they got hold of certain documents in this entire investigation, what they got to know, there was no logical explanation of that 38 crore rupees. Out of 38 crore rupees, again, extremely important, 21 lakh rupees went to Gautam Navlakha. He is also a shareholder, and along with Gautam Navlakha, there were certain individuals, certain journalists who also got that money. This explosive investigative report has sparked off a massive political fight as the BJP has raked up the Rajiv Gandhi Trust's alleged funding from China and questioned why the Congress was quick to jump to NewsClick's defense back in 2021 during the Enforcement Directorate raids. 2008 में इनका एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को। और ये राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पेमेंट की गई 2005-7 के बीच में, ये किस लिए की गई? और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी यूपीए की, और वही यूपीए सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं। The BJP has also put the focus on how misinformation was being spread rapidly on social media to create an anti-India narrative. There is an attempt to rein in misinformation. These platforms jump along with their friends and rally behind this false cover of free speech. The right to free speech as guaranteed in our Constitution is certainly not and must not and should not be a cover for misinformation directed at our nation's rise. The Rajiv Gandhi Trust has been accused of receiving donations from Chinese entities between 2005 and 2009 under the leadership of Sonia Gandhi. As the BJP Congress political fight blazes on, the question over whether some journalists have become Ji Huzuris to Xi Jinping has sparked a massive international debate. With Munish Pandey in Delhi, Bureau Report, India Today. On the third day of the Gyanvapi survey, the court ordered survey of Gyanvapi, including the Wazu Khana, to determine if the mosque was actually built on a pre-existing temple or not. The Muslim side is now claiming the symbols on the walls are not Hindu symbols. The Hindu side on the other side is claiming that they found remains of Hindu idols in the Gyanvapi mosque. And the primary stage of the survey at the moment is over. The Gyanvapi mosque gates opened once again on Monday. The survey continues on the premises for the 5th day now. The Archaeological Survey of India survey is being carried out to determine if the mosque was built on a pre-existing Hindu temple.
ASI used plenty of machines. The GPR is already in actions. The area near that particular tehkhana and also near the tombs were being identified, checked, screened, mapping, and everything related to measurement work has been almost completed, and GPR technology is also into use, but the survey team may take around 1 to 2 weeks for the completion of survey. मेजरमेंट का कार्य उन्होंने किया है, नाप जोख कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सारी चीजें, सारी कार्रवाई वो कर रहे हैं। आज भी गुंबज में भी उनकी कार्रवाई चली है। मुस्लिम पक्ष भी आपके न्यायालय का जो आदेश है, न्यायालय के आदेश का सकारात्मक रूप से सहयोग कर रहा है, सम्मान कर रहा है। The Hindu side claims remains of idols were found in the complex, apart from a half-man, half-animal Narasimha statue. जो तहखाना है खोला गया, चाबी जिसकी है मस्जिद कमेटी की वजह से, उसको खोलने में पहले एतराज़ किया गया, फिर खोला गया। तो वहाँ आप लोग जब पिछली बार भी गए थे, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप लोग थोड़ा सा देख के शॉक थे कि उम्मीद नहीं थी, दिख गया? देखिए, उसमें हमारे मंदिर के सारे अवशेष थे और एक मंत्र लिखा हुआ था, त्रिशूल था, डमरू था, शंख था, और ये नहीं दूसरे भाषा में लिखा था, मतलब देवलिपि भाषा में लिखा था। लिखा था हम ही लोग का, लेकिन देवलिपि भाषा में लिखा हुआ था। But in a stunning claim made by the Muslim side, their lawyer claimed the Trishul symbol found in the complex is actually Allah written on the walls of Gyanvapi. आप कहते हैं त्रिशूल लिखा, हम कहते हैं अल्लाह लिखा, हम भी तो अल्लाह उसी तरह लिखते हैं। हम भी तो अल्लाह लिखने का ये वही सिस्टम है जिस तरह से त्रिशूल बनाने की बात करते हैं। The Muslim side even admitted to the presence of Hindu symbols in the Gyanvapi, but claimed that such motifs were constructed by Mughal Emperor Aurangzeb to promote Hindu-Muslim harmony. कभी आज तक इस तरीके का कोई निशान नहीं दिखा और नहीं दिखता। मैं सवाल करता हूं कि अगर फर्ज कर लीजिए कि किसी मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई भी जाएगी तो उसके निशान को क्यों बाकी रखेंगे? सब तो छुपा देंगे। इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके का बयान गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जबकि कोर्ट के अंदर मामला भी चल रहा है, विचाराधीन है, कैसे कोई आदमी इस तरीके का बयान दे सकता है? While digging is prohibited for the Supreme Court mandated survey, the survey team is relying on ground penetrating radars to locate any pre-existing structures. But what really is the Gyanvapi truth? We'll only know once the survey team submits its report. You can say a good news is that finally, after the verdict of Supreme Court, now the Muslim side and Intizamiya committee is supporting this particular ASI survey, which seems to be on for the next 2 weeks. But it is evident that many such proofs with relation to the temple, that there could be a temple there in the previous ages, have been found as claimed by the Hindu side. With cameraman Neeraj Kumar, Samarth Srivastava for India Today. It is time now for us to take a very quick break. More news coming up on the other side. You are watching India Today. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting, India Today reporters fearless on the ground. Stone pelting was so aggressive from the both sides. Entire market in the area has been shut right now. Attacked the cyber police station of Noor. Facts, questions, What resulted in the communal clashes? and first-hand reports. एकदम ही पत्थर आए हैं ऊपर से छतों पे से गोली लग चली है, पीछे वाला शीशा टूट लिया। 100% accuracy amidst the blaze. We track the face of every story. India Today. India United. You are watching India Today.
Now, the chilling new audio tape that exposes that it was a planned attack, an attack on the devotees at the Srinagar Shiv temple 45 kilometers away from Nuh, is quite disturbing. An audio tape where the speaker taunts the residents of the locality for being timid despite their numerical strength, and then goes on to say that there are hardly 100 to 120 devotees at the temple and at least 20 must be killed. The police at the moment is investigating the source of the audio tape, trying to find out who all shared it and the role that this tape played in the violence that followed. The police are now insisting prima facie it seems that the evidence at the moment is pointing towards the fact that this violence was meticulously planned. My colleague Arvind Ojha with this India First exclusive. Explosive revelations on Nuh riots. India Today has accessed a 2-minute 50-second audio clip that allegedly shows the violence was planned in advance and the plot was to